Who is going to spin the coin? Mr. Arif is going to call. Tail is the call. It comes down as a tail. And Mir Arif, what are you going to decide? Bat first. What's the strategy for today's game? Nothing new. Just try to keep the score running around like 170, 180 is a good total on this ground. I think we can do that. Is there any change in the lineup? Not really. Same team, almost same. No, three changes are there. Yes. Best of luck for today. Thank you very much. Thank you. And we have Mr. Rahul. If you have won the toss, what would have been your decision? We are going to bowl first. So if we won the toss, we also going to bowl first. Tell me something about this event, about this organizing body. You have played a lot of cricket. Yeah, but this atmosphere is very new for us, and we came from very far. So this is a very good environment for our team, and yeah, we are looking forward for a best cricket. Any change in the lineup? Yes, we have two changes, so we are looking forward to bowl first. Best of luck for today's game. Hope you will make a comeback. Thank you, sir. News from the center is captain of Velly Fresh Cold Chain, Mir Arif, has won the toss and he has opted to bat first.
Zahid bhai, lecture joy. Overexcited. Next time, overexcited as vehicle. Which come umpire? Minus. Yeah. Gaban yıkar matli. Yıkar meş tek. Paga. Onun his team to. Orada yok. Not orada. Tunçna पंजे बाज गए. अस्सलाम वालेकुम, फिर से स्वागत है आपका इस मंच पर। और यहाँ दूसरा मुकाबला आज के दिन का शुरू होने जा रहा है। वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब के कप्तान मीर आरिफ ने टॉस जीतकर ये फैसला लिया कि पहले वो बैटिंग करने के लिए जाएंगे। और कठुआ वॉरियर्स की तरफ से सलामी जोड़ी जो बीच मैदान पर आई हैं और कठुआ वॉरियर्स की तरफ से गेंदबाजी करने की तैयारी में ऑफ स्टंप से बाहर थी ये गेंद और स्ट्रोक खेलने के लिए जरूर गए। गेंद उस दिशा में गई है ऑफ साइड में। जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो किया जाएगा। खाते में 1 रन, स्कोर कार्ड में 1 रन का इजाफा हुआ। इस इजाफी रन के साथ खाता खुला टीम का और टीम का स्कोर 1 बिना किसी विकेट के नुकसान पर इस ओवर की दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर में दूसरी बार ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी होगी। इस बार क्या सरल लगाया नहीं, काफी करीब से गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में चली आई है। विकेट कीपर ने बाकी बचा काम पूरा किया। टीम का स्कोर 1 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मीर आरिफ वो स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। आप देख सकते हैं कि कहां ये गेंद की गई। एक बेहतरीन गेंद थी। यहां गेंदबाज पंकज कुमार के जिस पे रन नहीं आया है। आरिफ मीर खाता खुलना अभी भी बाकी है आरिफ मीर का। सुहेब थोपा 1 के स्कोर पे नाबाद। नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर फिर से नीचे रहती हुई गेंद। इस बार भी बैक फुट पर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए। गेंद विकेट कीपर के हाथों फील्ड हुई और वीएफसीसी ने अब तक वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब का जो स्कोर कार्ड है 1 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ये पहला ओवर इस पारी का। इस ओवर की ये चौथी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की चौथी गेंद करने के लिए तैयार गेंदबाज पंकज कुमार सटीक रन अप के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं। स्टंप के काफी करीब से मिडिल स्टंप की सीध में की गई गेंद उस दिशा में गई। वहां खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड करके थ्रो किया। क्या तीसरे अंपायर से पुष्टि की जाएगी? जी हां, यहां तीसरे अंपायर से अब पूछा जाएगा क्या बल्लेबाज क्रीज के अंदर सुरक्षित थे या क्रीज से बाहर पाए गए। इस बात की पुष्टि होनी अभी बाकी है। आप देख सकते हैं बैक फुट पर चले गए थे बल्लेबाज। वहां से गेंद को फील्ड करके थ्रो किया गया। ऐसा लग रहा है कि क्रीज के अंदर सुरक्षित थे यहाँ बल्लेबाज।
ऐसे में कोई खतरा नहीं। आरिफ मीर का खाता खुलना बाकी, 3 गेंदों का सामना किया। सोहेब थोफा का जो निजी स्कोर हैं वो कुल मिलाकर एक गेंद का उन्होंने सामना किया। वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। इस बार बल्ला चलाया, गेंद गई है लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए। करारा स्ट्रोक उस दिशा में, वहां कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। हालांकि लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी जरूर तैनात थे, उसके लिए अवसर बना नहीं। काफी दूर गई है गेंद, बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है। इस छक्के के साथ 7 रन टीम का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इस बार ऑप्शन से बाहर थी, पंजू पर उछलकर गेंद को धकेला, गेंद चली गई है ऑफ साइड में। वहां देखा जाए 7 रन टीम का स्कोर। पारी का ये पहला ओवर समाप्त हुआ। Think mobile. Think Solucity. विकेट्स गिरते रहेंगे, लेकिन आपके पैसे को गिरने न देगा हाउस ऑफ वेल्थ। पूरे हैं हाउस ऑफ वेल्थ। दिन का जो पहला मुकाबला हुआ उसमें जीत हासिल करने में सफल रही है सुल्तान वॉरियर्स की टीम। और सुल्तान वॉरियर्स बारामूला ने एक बड़ी जीत हासिल की है। हालांकि एक समय ऐसा लग रहा था शायद सुल्तान मुकाबला जीतने में सफल नहीं होगी, जब 8 झटके लगे थे सुल्तान वॉरियर्स को। उसके बाद कमाल की वापसी रही है और नदीम भट्ट ने आखिरी ओवर में 22 रन अर्जित करके एक सम्मानजनक स्कोर तक टीम को जरूर पहुंचाया। 140 बनाए थे सुल्तान ने। उसके जवाब में लक्ष्य से काफ़ी दूर नजर आई है टीम सिके स्टार बड़गाम, और एक तरफा मुकाबले में सिके स्टार बड़गाम को हराकर लगातार इस इवेंट में एक और बड़ी जीत हासिल की है सुल्तान वॉरियर्स ने। 7 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। सोहेब थोफा ने 1, आरिफ मीर ने 6, 5 गेंदों का सामना किया है। दाएं हाथ के गेंदबाज की गेंद ड्राइव किया गया, गेंद आई है मिड ऑफ पर तैनात खिलाड़ी के पास, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। ऐसे में कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर कार्ड में किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। और ये इस पारी का दूसरा ओवर, ये दिन का दूसरा मुकाबला है कठुआ वॉरियर्स बनाम वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब। वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब के कप्तान आरिफ मीर ने टॉस जीतकर ये फैसला लिया कि पहले वो बैटिंग करने के लिए जाएंगे। इस बार गेंद को निकाला बैकवर्ड पॉइंट और गली के दरमियान से गेंद चली गई है बाउंड्री लाइन से बाहर। यहाँ 4 रन और मिलेंगे। ये शानदार स्ट्रोक सोहेब थोपा का ऑफ स्टंप से बाहर, केवल गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया और गेंद को प्लेस किया 2 खिलाड़ियों के दरमियान से। 4 रन और मिलेंगे। यहाँ टीम के खाते में 4 रनों का और इजाफा। कुल मिलाकर स्कोर कार्ड इस पारी का जा पहुंचा इस चौके की मदद से 11 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर वैली फ्रेश ने यहाँ ये फैसला लिया कि पहले वो बैटिंग करने के लिए जाएंगे। मैं हूं नासिदार। मैं स्वागत करना चाहूँगा अपने सहयोगी और ऑफिशियल इंग्लिश कमेंटेटर इस लीग के बाबा निसार साहब का। Thank you, Nasir, for introducing me once again. And it's just kind of a start where you see some strange situations with Valley Fresh Cold Chain. And etched and gone through. Well, this was a simple catch. Had there been some regular and experienced keeper, this could have come easily. It's coming out quite, I would say, lucky moments per Sohaib Dar, captain. There you go. Chased and followed. The wicketkeeper got his right glove. It's coming out as we believe some very, very lucky moments for Valley Fresh. The team, they are playing the 4th match. They have lost all the 3 before. And now, captain and owner of the team just making it to the center. And the power play after winning toss, batting first. Arif Vachi, a local guy, has been hit for 2 fours in this very over. Today is one more change. I could see Shahid Ghani, who is also making his place in the Valley Fresh Cold Chain. Very wonderful batsman from Tukru Shopian. And he always goes and loves to smile. Oh, what was that? Capped very, very low. And even though the 2 batters will go through, and they will stroll their ends, it's a it's a wide as well. The first match of the day, that was absolutely clinical performance from Sultan Warriors Baramulla, defeating
Stars Badgam, it just looked like a one-sided affair. And this is some officials. You will see Amir, you will see an umpire as well. You will see one of the officials from the broadcasting team. Arif goes. Tucks it round, straight to the cover point. Not for the runs. A dot ball to finish. 10 from the over. 2 gone. Winning toss, batting first to Velly Fresh. They're giving something a bit of stage to try and enjoy it. 17 for no loss. These are some beautiful views. Drone visuals. Absolutely mesmerizing view of this Laktipura House of Well Champions League. And we would definitely love to say great thanks to Zahid Afzal, great thanks to Jahangir Alam, the title sponsor, House of Wealth Financial Services, for providing such a great and grand setup and platform to the young guns. And also to the spectators. They always keep on praising to the sky. This is something that is making the dream come true. So Pankaj back into the second. Nicely shot, played, beautiful. This is a backward punch. And outfield does look a bit slow on that moment. And ample time for Captain Sebdar to come back for 2 more runs. It is overcast conditions. And if the match goes to the second innings, only 5 overs get completed, it will be considered as a full match. But before that, there is any problem as the rain can, this match will be rescheduled. That's how the game will go. Pankaj Kumar, had a chat with him a day ago. Looked quite excited. They looked quite good, sharing this very good platform under such a massive crowd. Washwell is bowling quite a good line. There's no doubt about that, Pankaj. It's only their fielding skills that can make them feel a bit down. Rest, yeah, just getting, we believe, better day by day. It was quite a very, very new experience for them to try and play at this kind of stage and setup. Now into the second game. They are just a bit, we believe, more better. You get used to the situations and conditions. There you could see some important officials. Amir Ganai, his friend Murtaza, who is doing the job as a scorer. On the back, but he goes, could be tied. Not able to just pick that one hand. It's one more single. Projected score, if you try and have a look on that, it does indicate only 158. That still can come out as a very tough chase, looking at the batting stances, batting skills of Kathua Warriors. And on the back foot again. Oh, this time! And he needs a direct hit. He needs a direct hit. And he needs to hit the bullseye. And Arif Mir, the owner of Velly Fresh, had given up. And it's coming out as a quite lucky phase for this man, big man. There you could see, he was nowhere in frame. And it's breezy. Winds have started to blow a bit. There you could see spectators coming, enjoying, sitting, relaxing, focused. Kumar. Last ball. Losing his crease, losing his wickets, exposing them. Just 5 from the over. Winning toss and batting first, VFCC. 3 gone, 2 extras. It's 22 for no loss.
And I believe Arif will continue. And a day ago, when I was talking about the arrival of Kathua Warriors captain Suraj Prakash, and he did mention that we're completely delighted. Gone through a bit of fumble, just stopped the pace. And it did just convey their message to the players, to the teams outside Velly. I would love to just have more teams. They looked all full of smiles, looked all glorious, looked all enjoying this fun. It's a good start. And he cuts again, but finds the point fielder. Not able to pick that gap. Arif Mir, who is the owner of this Velly Fresh cold chain. Big man. Loves to play cricket, loves to be engaged. And I believe today he knew that we're already out of this league, so better to try give me a bit of time to try and join batting. And it goes big! It goes massive! It goes 6! And he goes into the dugout! What a shot from Arif Mir! Slightly it was on the upper line. And he goes for that smash and swing. And you also could see the smiles on the face of Sebdar. He could not believe it. And he put his dancing shoes on. And he hit, it stays hit. And it was written 6 runs all over. Lovely shot from Arif. Projected score revealing 158, but with the way, wickets, no wicket down. It might give them an upper edge, having wickets in hand. It's, just quite an easy moment by. Then the rest of batters, they can surely come and take their go. 7 from the over, even though Arif Vuchi is making a good comeback after being hit for the glorious 6. Last ball of the 4th. And bowled him! Just kept low. He was going to create a bit of room. But when you go back, ball keeps low. This is something you cannot take the full control of. And smiles on the faces of Kathua Warriors. It's Arif and it's Pankaj Kumar. They're enjoying this big wicket. Arif Mir goes. Owner of the team goes. It's 29 for 1 and we're done with 4. Just watch out. That cap low, that was a bit pacey. And he was having no idea whatsoever. चलो वाह भाई लोग चलो So Muti Makaya. Muti Makaya, the new man, 1 down batsman. And he walks down to the centre. And he's going to join the captain. Basic. There is a bowling change. It's Rajesh Lal.
Let's see how he shows and comes up with his impact. It's a 13 match of this House of Well Champions League. Kathua Warriors playing their second, Velly Fresh playing their last. They're already just lost all the three. May get to the victory, with the way situations does look. So Rajesh Lal with a shorter run-up goes to ball medium pace. Good ball. Still, these are the learning days. Slips in place. Oh, driven, beautiful, driven excellent, driven elegance and driven fabulous. This is some class from a class act to Sohaib Dar. When you bowl this half volley, this is something you need to go with exquisite timing. And this will... Well, this comes to me at the best shot of the match so far. Glorious. You won't see these cover drives many often. Now the back foot. Ample time for Muteeb to try and just stroll the ends for a single. And eventually, it's a fifth over in progress. Already an over left of the power play. I can see Dr. Tausif Iqbal, who is famous by the name of Amir Tukru, is also in the side. Had a tough day with the bat. They have made a change. Shahid Ghani was into the side today. These are some important members of Laktipura Cricket Association. Makaya, the left-hander, gets ready to face the first ball. And starts off with a wide to this man. It's a big wide down the leg stump. Can't afford to just bowl too many. And Velly Fresh, they know they can't go to the next round. But I still believe, they're not good with that positive and attacking approach. Gone through again. Well, this is absolutely something you can't bowl. Rather it's a no ball, is it? For sure, that was down the leg stump too much. So these are 4 wides, rather 4 extras, and it came off a no ball as well. So it's a free hit to Makaya. It's a golden opportunity for him to try and just come down the track and hit him over. Shortly, we will be joined by Dr. Tausif Iqbal. And again, just trying to bowl him on the pads. It could be tight and looked quite slow with the approach of picking that ball. Still a ball to go. Rajesh is not having that full control on that line. Straying down the leg quite a few moments. And the smile is on the faces of Kathua Warriors, just tells you the story. Completely blissed for playing at this grand stage. And I would love to just introduce to you, I've got a guest with me in the box.
And gone! What a ball! well, well. I was about to have Dr. Tausif Iqbal in the commentary box, but as the batsman goes out, he quickly had to go to the centre as he's replacing this Mutib Makaya. What a ball he got. And Rajesh Lal is all delighted. He's all absolute excited. And I was about to introduce to you the guest in the box, Dr. Tausif Iqbal, who is famous by the name of Amir Tukru. And as the fella batter, he got to go down to the centre. Well, that was a beauty. Cap low. And Makaya was having no idea whatsoever. We're going to wait a bit. Let's see how he approaches now. Kathua Warriors. They are coming all together a different and strong side today in the second match of the league. Fairly fresh, under a bit of stress. Well, captain will have to play long and big today. 19 of 15 is playing. It's going to be the last over of the power play. Let's see who goes and bowls now. It's Rohit Badwal. For Sohaib, we do have a 5 leg up. We do have a mid-wicket inside. We do have a long on wide. On the offside, the third man stands fine. Point, cover point, extra cover short and mid-off up. And outside off stump wanted a guide and finds no contact. Very good control by Kathua Warriors. Not only containing that run rate, having 2 wickets. Arif Mir and Mutib Makaya. Mutib Makaya had a very, very terrible, I would say. And 1 knee down. He goes over point. And the ball is running down. It's going through and it's going for 4. Once again, he tries to bowl a bit fuller. And this is making Sohaib opening his arms brilliant. There you go. Good thing about the shot. He tried to reach to that pitch. And when you reach to the pitch, you totally have got full control. And that was a living example. Toss driven straight down the ground. Is it? Oh, what a stop! What an absolute stop by that long off fielder. Well. This is called giving your best. He's a local boy, Sujil. And I believe his father is also watching him. His father, Mr. Muhammad Akram. He's a very, very regular viewer, very, very regular spectator. Sujil, you best. You beauty. Totally, he saved 3 runs for his side. What an absolute Jaffer in the field. And Amir just gets off the mark straight away. Tausi. He's a class act. Stylish. He's known for those reverse shots. And if he does stay on the crease, he will come for those shots quite often. We talk about that Sujil's approach, diving, full length. It was about to beat him, but no, he just gave all his grit and determination. And he saved that ball just going over. So 2 Shopian guys playing now. They both know each other quite well. Strong with the communication. Good with the running, good with the skills. And just 2 balls to go of the power play.
This is giving you the clear view. There was just a bit half volley. And he was trying to thrash it through off stump. And eventually just could not get it quite, you know. And it was a bit of an overthrow. And eventually 5 runs. Drives handsomely. Tausif should be 2. And there will be 2. So that's end of foul play. Just 10 runs in the form of extra. 2 wickets down, but still I would say Velly fresh. Looking quite controlled. They are 55 for 2. हर साल हजारों लोग गलत इलाज का शिकार होते हैं। वजह वही पुरानी, सही वक्त पे सही डॉक्टर का ना मिलना या सही वक्त पे सही डॉक्टर तक ना पहुंच पाना। अब सोल्यूशन है आपके हाथ में। टेलीप्रैक से कंसल्ट करें देश भर के टॉप डॉक्टर से, कहीं भी कभी भी। तो अभी डाउनलोड करें टेलीप्रैक ऐप। तबीयत खराब है लेकिन हॉस्पिटल तक जाना डिफिकल्ट लग रहा है? डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि हम लेके आए हैं टेलीप्रैक, एक ऐसा स्मार्ट हेल्थ केयर ऐप जहां आप घर बैठे ही टॉप डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशंस कर सकते हैं। घर बैठे ही आप अपने लैब टेस्ट्स भी बुक कर सकते हैं और हाँ, यहाँ आप अपनी मेडिसिन भी इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी सेविंग्स के साथ। तो अभी डाउनलोड करें टेलीप्रैक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद और हार्दिक स्वागत सभी क्रिकेट श्रोताओं का। आज के दिन का दूसरा मुकाबला और यहाँ से वैली फ्रेश क्रिकेट क्लब ने 55 रन बनाए हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। सोहेब थोपा और तौसीफ इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि कठुआ वेरियर्स की बात की जाए तो उनका दूसरा मुकाबला, आज पहला मुकाबला यहाँ से हार चुकी है और देखना होगा आज क्या यहाँ से मुकाबला जीत जाएगी। और वैली फ्रेश कोल्ड चेन की बात की जाए तो 3 मुकाबले यहाँ से वो हार चुकी है। और आज एक बड़ा मुकाबला, आज के दिन का दूसरा मुकाबला। पहला मुकाबला यहाँ से सुल्तान वेरियर्स बारामूला की टीम ने स्टार्स बड़गाम की टीम को हराया था। और सुल्तान वेरियर्स बारामूला की बात की जाए तो दोनों मुकाबले यहाँ से जीत चुकी है। और स्टार्स बड़गाम ने अपने 4 लीग मैचेस जो है वो मुकम्मल किए हैं, जिनमें 3 में उन्होंने जीत दर्ज की और 1 मुकाबला आज हार चुकी है। अगर आज वो यहाँ से मुकाबला जीत जाती तो मेरे ख्याल से सबसे टॉप पे रहती। बहरहाल पारी का ये 7वां ओवर इस समय प्रगति पर। राजेश लाल गेंदबाजी कर रहे हैं अपने दूसरे ओवर के साथ और एक पार्टनरशिप को बिल्ड करना होगा यहाँ पर तौसीफ और सोहेब थोपा के दरमियान। हालांकि सोहेब थोपा की बात की जाए 30 पे नाबाद 20 गेंदों का सामना किया। और आज मौसम की अगर बात की जाए तो काफ़ी धूप खिली है आज आसमान पे और बारिश के भी इम्कानात नज़र आ रहे हैं। बहरहाल 7वें ओवर की तीसरी गेंद लेकर राजेश लाल तैयार। आप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर की जानिब से। अतिरिक्त रन में यहाँ से इजाफा होता हुआ और इस 1 रन के इजाफे के साथ 59 पे पहुँच चुकी है वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम। अभी तक 2 विकेट गंवा चुकी है। तौसीफ ने केवल 5 रन बनाए हैं, 3 गेंदों का सामना किया। और थोड़ा सा समय लेना होगा यहाँ से तौसीफ को, क्योंकि शुरुआत में जो 2 झटके लगे यहाँ से वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम को और बल्लेबाजी में सुधार लाना होगा। एक अच्छी पार्टनरशिप को यहाँ से बिल्ड करना और एक लंबे लक्ष्य तक जाना होगा यहाँ से वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम के लिए। हालांकि पहले 3 मुकाबले वो यहाँ से हार चुकी है, आज तक कोई भी मुकाबला नहीं जीत पाई है वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम। तो देखते हैं आज ये अंतिम लीग मुकाबला क्या यहाँ से जीत दर्ज कर पाएगी वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम, ये देखना होगा। फिलहाल राजेश लाल अपने दूसरे ओवर के साथ अभी तक 12 विकेट 12 रन उन्होंने खारिज किए और 1 विकेट उनके नाम। सटीक लाइन के साथ इस बार गुट्टा टेक और गेंद को डिस्पैच किया है फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर। 6 रन के लिए गेंद चली गई है। एक खूबसूरत स्ट्रोक सोहेब थोपा के बल्ले से और इस छक्के के इजाफे के साथ स्कोर में इजाफा। 72 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ये देख लीजिए किस प्रकार से पूरी तरह से टाइमिंग और ताकत का इस्तेमाल किया यहाँ से सोहेब थोपा ने और गेंद सीधे जाके ग्राउंड से बाहर चली गई है 6 रन के लिए। एक बेहतरीन बल्लेबाजी आज यहाँ से देखने को मिल रही है सोहेब थोपा की। हालांकि वो 36 पे पहुंच चुके हैं, 21 गेंदों का सामना किया। राजेश लाल इस ओवर में अगली मरतबा गेंद करेंगे। हालांकि अभी भी 2 गेंदें इस ओवर की आनी बाकी है। इस बार कट करने में कामयाब, लेकिन डीप में प्रोटेक्शन
केवल एक सिंगल मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। और रणनीति की अगर बात की जाए तो अच्छी खासी रणनीति यहाँ पे नजर आ रही है। 9.9 की औसत से यहाँ पे वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम अभी तक रन्स बना रही है और 67 पे पहुंच चुकी है। 2 विकेटों के नुकसान पर वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम। हालांकि टॉस जीतकर आज पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। देखते हैं उनका ये फैसला किस हद तक सही साबित हो जाएगा इस मैदान पे। हाउस ऑफ वेल्थ चैंपियंस लीग लक्टीपोरा अंतराल 2025 का आज ये 14वां मुकाबला, आज के दिन का दूसरा मुकाबला, माफ कीजिएगा 13वां मुकाबला और आज के दिन का दूसरा मुकाबला। पहला मुकाबला यहाँ से सिक्का स्टार्स बड़गाम की टीम ने खेला था सुल्तान वेरियर्स बारामूला की टीम के साथ। Think mobile. Think Solucity. विकेट्स गिरते रहेंगे लेकिन आपके पैसे को गिरने न देगा हाउस ऑफ वेल्थ। House of Wealth को तबीयत खराब है लेकिन हॉस्पिटल तक जाना डिफिकल्ट लग रहा है, डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि हम लेके आए हैं टेलीप्रेक, एक ऐसा स्मार्ट हेल्थ केयर ऐप जहां आप घर बैठे ही टॉप डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशंस कर सकते हैं। घर बैठे ही आप अपने लैब टेस्ट्स भी बुक कर सकते हैं और हाँ, यहाँ आप अपनी मेडिसिन भी इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी सेविंग्स के साथ। तो अभी डाउनलोड करें टेलीप्रेक ऐप। 7 ओवर का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और 68 रन बनाए हैं अभी तक वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम ने और 2 विकेट शुरुआत में ही यहाँ से गंवाए हैं। 9.71 की औसत से यहाँ पे रन्स बना रही है वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम और देखना होगा क्या 170-180 तक लेके जाएगी यहाँ पे वैली फ्रेश की टीम इस लक्ष्य को। अगर यहाँ से 170-180 बनाने में कामयाब रहेंगे तो निश्चित तौर पे वो आज इस मुकाबले में मेरे ख्याल से जीत दर्ज कर पाएंगे, क्योंकि अगर कठुआ वेरियर्स की बात की जाए तो पिछला मुकाबला उन्होंने एक बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पे हारा था और तब जाके वो जेके लेमन शुपैया की टीम के साथ वो 237 रन का टारगेट खड़ा किया था जेके लेमन शुपैया की टीम ने और दूसरी पारी में केवल वो 97 रन बनाए थे कठुआ वेरियर्स ने। लेकिन आज चेंजेस नज़र आ रही है कठुआ वेरियर्स की टीम में और देखते हैं आज बल्लेबाजी में किस प्रकार से वो सुधार लाएंगे, किस प्रकार की आज बल्लेबाजी करेंगे इस मैदान पर। हालांकि मेहमान टीम है, काफ़ी दूर से आई है और इम्प्रेस हुए थे इस विजुअल्स को देखकर फेसबुक और यूट्यूब पे। जब उन्हें वो मुकाबला देखा था तभी जाके उन्हें मन बनाया था कि हम भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और आज बेहतरी यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि गेंदबाजी की बात की जाए अभी तक अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखा रहे हैं यहाँ से कठुआ वेरियर्स की टीम। सटीक लाइन के साथ आज गेंदबाजी कर रहे हैं और 7.1 ओवर की गेंदबाजी, 68 रन, 2 विकेटों के नुकसान। Thank you, Arslan. It's a local boy. It's Sujil Mansoor. What a moment for this man. You know, his grandfather, Mr. Mohammad Akram, is watching him. He looks so elated. He looks so delighted and so excited to have his grandson playing. The backfoot punches it beautifully. That's the best thing, you know, you will find in Tawfiq Iqbal. He's a busy player. And the style he carries, you know, the match readings, the situation observation. He is a master player when it comes to play those shots. Sujil Mansoor actually is famous out in this part of the world by the name of Sujil Anderson. So it takes us back to those, you know, great moments from James Anderson from England. The way he just up the back foot. It's landing short. And recently, Anderson Tendulkar test race. That was just something amazing test cricket we did happen to watch out. You know, where in India just came back stronger. Good ball keeping low. So that's the only thing that you can just create pressure on Tawfiq Iqbal. You keep ball low, you keep it in line. Eventually is bowling quite good at this moment, Sujil. Today we do understand that Kathua Warriors have come up some changes. Playing Arif Vichi, playing Sujil Anderson. Just trying to strengthen the bowling at the batting unit both. You never know, things can come out quite, you know, we believe interesting against the sides of Valley Fresh.
They are also come up with some full preparations. They're 71 for 2. The projected score revealing, with that run rate, over 9 will take them to over 180. Sohaib Dar bats on 38 of 24. Captain's knock. He also had a miserable, we believe, league where he could not impress as a batsman, as a captain. Sujil does come up with some changes at his own, just changing his troops. It's going to come out of the last ball. 3 runs so far. And on the back foot, lovely line. Just bringing the ball into the right-hander. And it's no run on the last ball. Finishes well, just 3 from it, 8 gone. Valley Fresh winning toss and batting first. हर साल हजारों लोग गलत इलाज का शिकार होते हैं। वजह वही पुरानी, सही वक्त पे सही डॉक्टर का ना मिलना या सही वक्त पे सही डॉक्टर तक ना पहुंच पाना। अब सोल्यूशन है आपके हाथ में। टेलीप्रैक से कंसल्ट करें देश भर के टॉप डॉक्टर से, कहीं भी कभी भी। तो अभी डाउनलोड करें टेलीप्रैक ऐप। Rohit Badwal. He already had a 1 over to his name. If you try and look at his nickname, his name is Shikari. Just to remember, if you go to the Bollywood, there was a movie by this name, Shikari. And in that, you will find a very wonderful actor. That was, who is given the nickname. He was called Chichibai and he was Govinda. He was the actor of that movie. The name Shikari, actually, it indicates that you want to do what we call shikar. You want to have a prey. You just come out as a predator. And the question is he going to make a shikar of something or someone, I would say. Like a Thopa, like a Tausif. But he's giving his brilliance. He's bringing his all mind into the play. And I believe he would be quite happy and delighted if he does get a shikar of any of these two. And Arslan, the way he is bowling, keeping it mixing, keeping it in combination, just bowls outside up, keeps it straight to the line. So you believe that it might give a bit of hesitation to the batsman. And that might be some moment for this man, Rohit Badwal, the shikari, and he comes up with a shikar of a wicket. जी हाँ बिल्कुल। तो अगर आप यहाँ से सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी करेंगे तो तभी जाके वो निकनेम जो मिला है शिकारी, तो शिकार कर सकते हैं यहाँ पे बल्लेबाज का, लेकिन अपनी लाइन में थोड़ा सा सुधार लाना होगा जिस प्रकार से यहाँ पर गेंदबाजी अभी तक कर रहे हैं। हालांकि रोहित बड़वाल पहले मुकाबले में नजर नहीं आए, इस बार खूबसूरत स्ट्रोक सीधे बल्ले के साथ, किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई है 4 रन के लिए। और फिर से खराब गेंद यहाँ पर रोहित बदवाल की जानिब से। और मुझे नहीं लग रहा है कि शायद इस लाइन पे वो किसी बल्लेबाज का यहाँ से शिकार कर पाएंगे और गेंदबाजी में पूरी तरह से सुधार लाना होगा। हालांकि आज उनका पहला मुकाबला इस मैदान पे, पिछले मुकाबले में ऐसे देखने को नहीं मिले थे। इस बार एक और खूबसूरत स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और 6 रन के लिए इशारा आएगा अंपायर की जानिब से। महंगा ओवर अभी तक साबित होता हुआ रोहित बड़वाल का। हालांकि पहली गेंद पे चौका और जो ही ऑफ स्टंप के बाहर गेंद देखी और पूरी तरह से टाइमिंग और ताकत के साथ स्ट्रोक खेला यहाँ पर बल्लेबाज ने और गेंद को डिस्पैच किया है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और अभी भी 2 गेंदें शायद इस ओवर की बची है और देखना होगा क्या कुछ कर पाएंगे इस ओवर में रोहित बड़वाल। अगली गेंद के साथ इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर स्लोवर, लेकिन मंगवाना पड़ेगा बाउंड्री लाइन के बाहर, रोड के बाहर ये गेंद चली गई है। तो इस प्रकार से शोएब थोपा के 50 रन मुकम्मल, 29 गेंदों का केवल सामना किया और 54 रन बनाकर नाबाद और इस छक्के के साथ अपनी अर्धशतक को मुकम्मल किया है शोएब थोपा ने। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन और शिकारी मेरे ख्याल से शिकार करने में नाकाम हो गए। And Shikari gets hunted.
He is not proving a hunter anymore. He gets hunted. And you never believe that he justifies his name, I should say. He is Shikari, but he gets hunted himself. And the hunter is captain of Valley Fresh, Soebdar. जी हाँ बिल्कुल। तो अगर बात की जाए तो शिकारी जो है वो खुद यहाँ पे शिकार हो गए हैं और अंतिम गेंद पे भी चौका लगाया है शोएब तोपा ने। इस प्रकार से ये महंगा ओवर समाप्त होता हुआ। और अगर बात की जाए तो 2 ओवर की गेंदबाजी में वो 35 रन खर्चे हैं। इस ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाए हैं शोएब तोपा ने। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन और इसी अंदाज से बल्लेबाजी करनी होगी तो तभी जाके एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पे बना सकती है वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम। और ये देख लीजिए किस खूबसूरती के साथ कट किया है गेंद को और शिकारी अपना पहला ओवर यहाँ पे काफी महंगा डालते हुए। 2 ओवर की गेंदबाजी 35 रन और अभी तक विकेट लेस नजर आ रहे हैं रोहित बडवाल। हालांकि जो निकनेम पड़ा है शिकारी तो मुझे नहीं लग रहा है कि अगर क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट में उनका नाम शिकारी पड़ा है। I remember that Bollywood song, Shikari Khud Yahan Shikar Ho Gaya. That was sung by, I believe, Asha Bhosle. And I believe he won't be given that option again to try and bowl out. Sujil Anderson, Sujil Manzoor. Lovely. That's what, brings the best out of this man, Tawseef. Soebdar is playing a captain's knock. He's coming into the form, but it's a bit late. Oh, gorgeous, gorgeous, gorgeous. But fielded well by Pankaj Kumar at the deep point. And the last over, we're in 3 boundaries, 2 sixes. Actually making Valley Fresh cold chain. Gone through. That's been the problem with the wicketkeeper throughout the day. This was there to be stopped. It's a stop ball. The umpire signals there was something brushing the pads and it goes over and goes for 4 leg byes. Not a good day in office with the ball. Kathua Warriors. Even though Sujil now strains, he is now also straying down the leg. And ultimately, what I reckon, there should be some catching fielders. If you look onto the mid-wicket, you will find a deep mid-wicket in place. No one inside the circle for stopping that single. You look on the offside, there's no one at the short cover position for that catch. Else there could have been a short extra cover. Oh! This is gorgeous. This is something sublime. And when it is Tawseef Iqbal, you got to accept this kind of a shot. He is absolutely treat to watch when he puts his dancing shoes on. Watch out. Stand and deliver. And I believe this was best for the photographers, He was holding his pose. Stand and deliver. Eyes on the ball. And he knew that's gone through and it's gone for 4. खूबसूरत स्ट्रोक तौसीफ इकबाल का। हालांकि कदमों का इस्तेमाल किया। हालांकि पूरी तरह से गैप का देखा कि 30 गज दायरे के बाहर कोई खिलाड़ी तैनात नहीं और उतना ताकत भी इस्तेमाल नहीं किया और पूरी तरह से गेंद की पेस का इस्तेमाल किया और गेंद को खेलने में कामयाब। 4 रन के लिए इस प्रकार से 10 ओवर का खेल मुकम्मल। 104। Think mobile. Think Solucity.
विकेट्स गिरते रहेंगे लेकिन आपके पैसे को गिरने न देगा हाउस ऑफ वेल्थ। रन्स तो बनते रहेंगे, आपका पैसा कब बनेगा? जाने के लिए कांटेक्ट करें हाउस ऑफ वेल्थ को। केल जान तो बाप थाक ये केल खबर कत खड़ा हो रेडस नश आर बस केल सो बॉलर को सब है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट मुकम्मल हो चुका है और 10 ओवर का खेल मुकम्मल 104 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हालांकि बाबा अगर पिछले मुकाबले की बात की जाए तो जिस प्रकार से यहां से कठुआ वॉरियर्स ने शुरुआती दो झटके दिलाए थे अपनी टीम को, जब आदिल कासरू और उमर गुल की विकेट हासिल की थी उन्होंने शुरुआत में ही, तो बाद में वो वापसी नहीं कर पाए क्योंकि वो सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी नहीं कर पाए, जिसके कारण जे के लिए शुपैयान ने 237 रन का लक्ष्य उनके विरुद्ध खड़ा किया था। और आज भी यहाँ से सेम सिचुएशन, जिस प्रकार से आज भी शुरुआत में दो झटके, लेकिन उसके बाद यहाँ से पूरी तरह से अगर गेंदबाजी की लाइन वो यहाँ से खो बैठे हैं कठुआ वॉरियर्स की टीम। मेरे ख्याल से आज भी एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पे बना सकती है वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम, क्योंकि एक अच्छी पार्टनरशिप सुहेब थोपा की बात की जाए वो 59 पे पहुंच चुके हैं, तौसीफ ने 16 बनाए हैं। 11वें ओवर की शुरुआत राजेश लाल पहली गेंद के साथ डिफेंसिव अंदाज के साथ इस गेंद को खेला है, शॉर्ट फाइनल क्षेत्र में गेंद चली गई है। 1 रन बनाने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास, इस 1 रन के साथ स्कोर 105 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक बड़ा मुकाबला आज, हालांकि वैली फ्रेश कोल्ड चेन की बात की जाए तो 3 मुकाबले यहाँ से हार चुकी है और हमारे ग्राउंड्समैन अपने बच्चों के साथ हाथ हिलाते हुए, क्योंकि बिल्कुल उनको पता है कि ऑन स्क्रीन इस वक्त हम नज़र आ रहे हैं और पूरी तरह से खुशी फील कर रहे हैं यहाँ से हमारे ग्राउंड्समैन और बहुत ही अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं इस मैदान पे। हमारे कैमरामैन का बिल्कुल फोकस, बेस्ट मोमेंट्स ऑफ द डे मेरे ख्याल से अगर बात की जाए इस मुकाबले की। Undoubtedly, Arslan, these are the best moments. You know, a parent having his wards, his children. He knows they are on the big screen.
So you believe, just apart from the game, when they go get back to the home, they do take that screen recording and showcasing it all their family members. This is something where you feel, we believe blissed, so jolly, so happy. And I believe Afzal Champions League is coming up with these memories. Next ball up in there, caught! It's gone! It's Rajesh Lal who has got one more. It's captain who goes out for 59. He was looking to try and go over extra cover. Not finding the proper control. Lal has his second, and then we FCC lose their third. They lose the captain. There you go. Just not finding right onto the part of the blade where he wanted. And Arslan, you believe, when you watch yourself on the big screen, these are some happy moments. जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसा पहली मर्तबा कश्मीर में देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने काफ़ी ज़्यादा देखा है, लेकिन कश्मीर में पहली मर्तबा ऐसे देखने को मिल रहा है, तो तभी जाके लोग जो है वो इतने एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के सामने। जब वो आते हैं तो काफ़ी खुशी यहाँ पे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से बड़ा झटका लगा वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम को, क्योंकि सुहेब थोपा एक सेट बल्लेबाज 59 रन बनाकर वो मैदान छोड़कर वापस चले गए हैं। एक बड़ी विकेट दिलाई है यहाँ से राजेश लाल ने। राजेश लाल की अगर बात की जाए, अभी तक अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन। And about that, boss and the owner of VFCC, both in the house, won't be wrong if we say it's boom boom. जी हाँ बिल्कुल, तो अगर बात की जाए जहांगीर आलम या मिस्टर जाहिद अफजल की, और काफ़ी हद तक इस टूर्नामेंट का सबसे अहम किरदार अगर रहा है, तो मेरे ख्याल से द बॉस मिस्टर जहांगीर आलम, जिस प्रकार से उन्होंने इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाया है, हर कोई फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की है मिस्टर जहांगीर आलम ने। Bad ball, and it does come up with 5 wides. Well, Rajesh Lal, not expecting from you. Being the pick of the bowlers, and if you bowl these wides, well, this will be absolutely something not to digest. Actually, I believe that he slipped the ball out of his hand. 5 wides. Zahra Rafiq, the new man, right-hander, replacing the right-hander. Once again, you could see it with screens. Dashing, rocking. I would call him, he's a movable man. He does love to move. Mr. Jahangir Alam. The best thing, what I like about this guy is he's having smiles on his face always, no matter what the situation is. Alongside Zahid Afzal, the chief organizer, and they're surrounded, the owner of Valley Fresh Cold Chain, Mr. Mir Arif. So you have any idea what they're guessing and talking and discussing about, Arslan? जी हाँ बिल्कुल, दिन ब दिन अगर बात की जाए तो दिन ब दिन इस टूर्नामेंट में इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। तो उसी प्रकार से मिस्टर जहांगीर आलम की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी प्राउड अपने आप पे फील कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था कि इस प्रकार का टूर्नामेंट यहाँ पे हो जाएगा। और आज यहाँ से जहांगीर आलम बिल्कुल उस सपने को हकीकत में बदलते हुए देख रहे हैं, और लगातार कोशिशें जारी यहाँ पर जहांगीर आलम की कि अगर और भी कुछ नया है तो दर्शकों को दिखाने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। Once again, those friends on the screen, they know it and they bring smiles. Very beautiful. Capturing from the camera personalities of House of Well Champions League. Last ball, it's Tausi facing. It's a big wide again. This time outside off stump, too much. काफ़ी ज़्यादा रन्स यहाँ पे एक्स्ट्रा की सूरत में खारिज किया। हालांकि इतनी बड़ी विकेट आपने ली और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट तो ज़रूर बढ़ेगा यहाँ पर गेंदबाज राजेश लाल के ऊपर, लेकिन फिर भी हालांकि पिछली गेंद 5 रन मिले, उस गेंद पे वाइड के चलते अब एक और वाइड यहाँ से डाली है। तो मेरे ख्याल से खराब गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुफ्त में यहाँ से रन्स खारिज करवा रहे हैं कठुआ वेरियर्स के गेंदबाज। और 11 ओवर का खेल मुकम्मल, 115 3 विकेटों के नुकसान पर। और ये दृश्य आप देख लीजिए कि पहाड़। हर साल हजारों लोग गलत इलाज का शिकार होते हैं। वजह वही पुरानी, सही वक्त पे सही डॉक्टर का ना मिलना या सही वक्त पे सही डॉक्टर तक ना पहुंच पाना। अब सोल्यूशन है आपके हाथ में। टेलीप्रैक्स से कंसल्ट करें देश भर के टॉप डॉक्टर से, कहीं भी कभी भी
तो अभी डाउनलोड करें टेलीप्रैक ऐप। ग्यारह ओवर का खेल मुकम्मल, 115 रन 3 विकेटों के नुकसान पर जहरान रफीक नए बल्लेबाज, और अभी भी 7 विकेट आपके हाथ में बचे हैं। 9 ओवर का खेल आना बाकी है। अगर यहाँ से 1-2 विकेट और लेने में कामयाब रहेंगे तो ज़रूर जो रणनीति है उस पर थोड़ा सी रोक लगा सकती है यहाँ पर कठुआ वेरियर्स के गेंदबाज। Safe. And he just stands like there as a warrior. Just bowling him on the pads. You know what I would be loving and chucking is the approach of Tausif. You know, he needs to stay patient. There you see Laktipura Cricket Association. Loving faces, smiling faces. Mr. Amir Ganai, Mr. Rauf, Mr. Rais, Mr. Munir, Mr. Imran Ganai, having some sips of Lipton tea, enjoying with a beautiful roti, I would say. Well, it has been, something very attractive today. Catching those golden moments, and it's quite visible to understand because Kotwa Warrior doesn't look that kind of a side where you can create those contest levels, but at the given day, you never know. And I believe this actually makes camera personalities try and bring all those visuals possible, reaching you, enjoying them on your screen. There you go. Now the school kid now, I guess he doesn't know that he's on the big screen. जी हाँ, बिल्कुल स्टूडेंट को यहाँ से कैप्चर किया है हमारे कैमरामैन ने, क्योंकि अगर आज के दिन की बात की जाए तो आसमान पे गहरे बादल है और जो साइड स्क्रीन लगा है बिल्कुल वहाँ से साफ आज काफ़ी दूर से नज़र आ रहा है, क्योंकि जब कोई स्क्रीन पे आता है इस बार फुल टॉस गेंद ऑन साइड के क्षेत्र में गेंद को मोड़ा है। 1 रन बनाने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास, और इस 1 रन के इजाफे के साथ 119 वैली फ्रेश कोल्ड चेन का स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये 12वां ओवर इस समय प्रगति पर, अंतिम गेंद आनी इस ओवर की बाकी है। राहुल कटल जो कि नए गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी, अभी तक केवल 3 रन खर्चे हैं अपने पहले ओवर में, हालांकि पिछले मुकाबले में भी अच्छी बल्ले गेंदबाजी की थी राहुल कटल ने, और इस पर ड्राइव करने में कामयाब। 1 रन बनाने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन के साथ स्कोर 120 पे पहुंच चुका है 3 विकेटों के नुकसान पर, और 12 ओवर का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। Once again, those beautiful and smiling faces. Some love for Murtaza and Akib sir as well out there. This is quite deliberate, knowing that we're on the big screen, going with smiles on the face, but I just love it. And I believe so would be the viewers as well, talking gossips, sips of tea. Thank God there is no smoking, or else you would be on the screen. God. But eventually, Arslan, you would say these are some golden memories. Undoubtedly. When you go back to your homes, I believe you just, go back to that live streaming. You try and catch those golden moments. This is something that you will cherish about all ages. And I will show your kids that look how we have been enjoying in this House of L Champions League. So I believe hats off to the management, to the title sponsor, to the organizer, to the broadcasting operational side. Everything, we believe to that apt thing. And also we got, in the com box, a special man from Chef X. He is famous by the name of JB. And he is also enjoying, thanks to him as well, for providing such, we believe some tasty dishes to enjoy. Especially we would go for the chicken biryani. At the moment, let's see Arif Faji. Does he come back stronger? Goes to Tausif on the pads. Flicks beautifully. The ball is running down. Must come back for 2. There they are. It's a quick runner. And I
Now he holds the key, Tausif Iqbal, and he should be trying and growing and just converting this one into a big one. It's 122 for 3. There is a signal that they might be given a check for that run shot. And third umpire, Mr. Shoy, will just go for the same. There's a bit of a delay, a bit of a halt in the action. And he's going to check it out. Whether they too run a bit short of the crease. At this stage, it's 1-2 for 3. One thing is for sure, they go over 10 runs per hour. This will go and make them cross 200. And the question is, can they pass and beat that highest total, 236 by J11 Shopian, against the same side, bowling side, that's Kathua Warriors a day ago. And I believe Javed Riyal will get to the confirmation about that short run decision. He comes up, it's totally no short run, it's 2 on the trot, 2 doubles, 4 of the first 2 balls. Let's see if he's into the double dozen, is now 24. Cuts beautifully. Rather, it's a half punch, I would go for that. Zera Rafiq to Shahid Ganai to come. So there is plenty batting, a lot of batters left. And the question is where the train is going to stop for Velly. Fresh cold chain. And a good start. Now the 3 wickets down, over 100 runs on the board. And next shot, hit hard. Stopped by an extra cover. Another single. And still I can't understand the approach of the captain of Kathua Warriors. Why would you let Tausif Iqbal to try and go and sneak those easy singles? I mean, you know he's a strong player of the drive. He should have been having their covers in place quite close, either short extra cover or short covers. And will have actually trying to just have a bit of, we believe, more pressure on his mind to try and just divert those shots. It's captain just giving him freedom. He's giving him freedom to try and enjoy his drives. 6 runs from the 5 balls. Last ball to go. Makes that 7 from the over. Once again, drive is at back put. So 13 gone. It's 1-2-7 for 3. Think mobile. Think Solucity. विकेट्स गिरते रहेंगे, लेकिन आपके पैसे को गिरने न देगा हाउस ऑफ वेल्थ। तबीयत खराब है लेकिन हॉस्पिटल तक जाना डिफिकल्ट लग रहा है? डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि हम लेके आए हैं टेलीप्रेक, एक ऐसा स्मार्ट हेल्थ केयर ऐप जहां आप घर बैठे ही टॉप डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशंस कर सकते हैं। घर बैठे ही आप अपने लैब टेस्ट्स भी बुक कर सकते हैं और हाँ, यहाँ आप अपनी मेडिसिन भी इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी सेविंग्स के साथ। तो अभी डाउनलोड करें टेलीप्रेक ऐप। Lovely shot, straight down the ground. Chase! Oh no! At this moment, he comes up with one more diving effort. Not having the full control, and in the meantime, the ball just raises close down. Yeah, this will give you the clear visual. Just watch out. Came running, slides. Oh no, on that moment. Well, hitting the knee and goes down and passes him and passes for 4. It's 131 for 3. Slower ball, full toss. Not able to pick it beautifully. Once again, Sujil. Very quick. Not stopping. Tausif for coming back for 2 more runs. Only half centurion. It has been the captain, Soeb Dar. Out for 59 and Tausif chasing him, and he's on to the 32 now. And again, straight down the ground. He's trying to bowl a bit of variation, but it's coming out quite a flight ball. It's easy pickings for Tausif. We all know how talented guy he is.
So far, the best hasn't come out of this man. Rafiq is just giving a good company. And we do not find any, we believe, prime spinner, genuine one from Kathua Warriors. In the first match, we did see it was great impact on account of those spinners, be it left or right. When you have got that control on the spin and turn of the ball, and it could create a bit of impact. Projected score 198, but it should be more than that. And down the track, drivers beautifully, drivers hard, drivers quick, and Pankaj gives a stop. Now we could see some diving efforts, the longer versions of the boundary. 2 more runs. There is a bit of a check. Maybe that fielder touches that rope cushion. There he goes. Good use of the feet by Tausif. And I believe it's a wonderful stop. That's first impression. Very great to watch it out. Still giving a bit check. Got his right hand. Got over the ball. Slides, roll down. And had an absolute control on that ball and just made it throw back. And I believe it's fair. He has done an absolute job. Tremendous one. Tremendous effort for saving 2 runs. Pankaj Kumar. Jason Holder of Kathua Warriors. This is actually that last moment where the ball being in touch with that, we believe, index finger. If it is in touch, then it's a boundary. And umpire is. That's the reason why he's taking a bit more time to try and get the full visual. And that's the concern, because he is touching the rope and in the same time. And there comes the signal. It's a boundary. I believe that index finger, the right finger, we also call it, it's a forefinger in English language. And I believe that was in touch with the ball. And umpire called this, it's a boundary. So Tausif will have the boundary. Goes to 37 now. 12 runs from the 5 balls. Last ball from Kattal. Down the track again. No, not able to find the proper control. Down to the wideish mid-wicket. A single. 13 from it. 14 gone. It's 140 for 3. Hello? Some enjoyable moments. Now safe on the way to just go to the 40s. Bit of change in the troops by Kathua Warriors. Just 6 overs left in Sujil Anderson back in the business, back into the attack. 2 overs, none for 10. And let's see how he bowls to Tausif now. Watch pull. And all of a sudden, there is a big change in the weather conditions. Till last, it was coming out quite hot and humid. But today, it's not only breezy, it's a bit cold. I could see a lot of spectators. And he goes for the smash. This is what he was waiting for. Even though not able to make it carry all the way. 1 bounce over wideish long on. 4 runs. Nice shot. Just watch out. It was bowled a bit. Rolling his fingers all over.
But Tausif Iqbal was all waiting and he picked that line and slot. And he picked the gap well. And he goes over the fence, 4 runs. And again, he picks. Has it carried all the way? Waiting for a signal to confirm. There goes Javed Daryal on your screens. It's a biggie. It's half a dozen. It's a 6. How well he picked that line way back and off, way back onto the back foot. And you know he's a big man. He has muscles and power. And he is just 2 runs short of what would be the second half century from Velly Fresh. Already we have the captain, Suhaib, out for 59 and Tausif bats on 48 now. Well, it's really unfortunate for Velly Fresh now. He comes back in the form, but it's a bit late. Oh! Go and gone! This has gone over extra cover and this has gone for 6. A glorious way to bring your half century. And he will raise his bat to the dugout and he will get that standing ovation. Absolute god. And he will have that great applaud from his own captain and teammates. And this was something you never see out here in House of Well Champions League. Down the shows and just putting those laces on and makes the ball dispatch. Oh, the extra cover for half a dozen. I got with me Arslan back in the box. Arslan, Tausif, the second half centurion, and some delightful shots. 2 sixes and a boundary in this over. Sujil, the local boy, is under attack. जी हाँ बिल्कुल, तौसीफ इकबाल को रोकना अब यहाँ से काफ़ी मुश्किल है कठुआ वॉरियर्स के लिए, क्योंकि वो अब पूरी तरह से सेट हो चुके हैं और निगाहें जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से जमाई हुई है गेंद पर। तौसीफ इकबाल ने ये दूसरा बल्लेबाज वेली फ्रेश कोल्ड चेन की तरफ से जिसने आज अपनी अर्धशतक को मुकम्मल किया। इस बार हवा में गेंद, लेकिन पीछे खिलाड़ी, 1 रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। 15वें ओवर का इस समय खेल प्रगति पर और तौसीफ इकबाल 57 पे नाबाद 36 गेंदों से बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन, क्योंकि लेकिन अब जाके यहाँ से डेथ ओवर्स की गेंदबाजी, अंतिम 5 ओवर का खेल आना बाकी है और तौसीफ पूरी तरह से अब सेट हो चुके हैं। यहाँ से अब फुटबॉल की तरह उनको गेंद नजर आ रही है। 36 गेंदों से 57 रन की पारी अभी तक खेली है तौसीफ ने और अभी भी नाबाद है पिच के वस्त में। जहरान रफीक उनका पूरी तरह से साथ निभाते हुए और एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पे बिल्ड करते हुए, लेकिन 159 रन बनाए हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। अंतिम 30 गेंदों का खेल आना बाकी है। देखते हैं अंतिम 30 गेंदों में यहाँ से वेली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम क्या 200 का आंकड़ा आसानी के साथ छू पाएगी यहाँ से, क्योंकि विकेट्स तो काफी हाथ में, 7 विकेट अभी भी आपके हाथ में बचे और 30 गेंदों का खेल आना बाकी है। मेरे ख्याल से यहाँ से 200 से ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी वेली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम और अब जाके नए गेंदबाज 16वें ओवर के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। करंट रन रेट की बात की जाए तो 10.60 की औसत से अभी तक रन बना रही है वेली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम। पंकज कुमार आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। 2 ओवर की गेंदबाजी में केवल 12 रन खर्चे और अभी तक विकेटलेस रहे आज पंकज कुमार। हालांकि पहले मुकाबले की बात की जाए, इस बार खूबसूरत स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई है 4 रन के लिए। तो तौसीफ के बल्ले से निकलता हुआ वो एक और चौका, इस चौके के साथ वो 61 पे पहुंच चुके। 37 गेंदों का सामना किया। क्या मौका है आज तौसीफ के पास एक लंबी पारी खेलने का? क्या आज दूसरे सेंचुरियन बन पाएंगे तौसीफ इस टूर्नामेंट में, हाउस ऑफ वेल्थ चैंपियंस लीग में? क्या दूसरे सेंचुरियन बन पाएंगे? हालांकि कल भी मौका था फैसल लेफ्टी के पास, वो 83 रन की पारी खेली थी फैसल लेफ्टी ने, लेकिन अंत में वो अपना नियंत्रण खो बैठे और 83 रन पे वो अपना विकेट गंवाए हैं। लेकिन आज तौसीफ के पास, तौसीफ इकबाल के पास बड़ा मौका है, क्योंकि अभी भी 29 गेंदों का खेल आना बाकी है और 39 रन वो दूर अपनी शतक से। इस ओवर में अगली मर्तबा डाउन द ट्रैक, लेकिन ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, संपर्क नहीं हो पाया और गेंद सीधे जाके विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर बदस्तूर 163 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अगर बात की जाए तो एक बड़ा लक्ष्य आज बनाने में कामयाब रहे वेली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम। पिछले मुकाबले जो उन्होंने खेले हैं उसमें उससे कई ज्यादा बढ़ोतरी आज नजर आ रही है वेली फ्रेश कोल्ड चेन की बल्लेबाजी में। अगली गेंद के साथ इस बार गेंद को खेला है ऑन साइड के क्षेत्र में, लेकिन केवल एक सिंगल मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर 164 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 15.2 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल हो चुकी है
और पारी का ये 16वां ओवर। पंकज कुमार अपने तीसरे ओवर के साथ अभी तक 17 रन खर्चे हैं और आज कोई विकेट यहाँ से हासिल नहीं किया। पिछले ओवर में वो उमर गुल को क्लीन बोल्ड किया था पंकज कुमार ने और वो उसके बाद जो सेलिब्रेशन वो बिल्कुल देखने वाली थी। क्या आज विकेट लेने के बाद वैसी सेलिब्रेशन नजर आएगी? लेकिन इस बार क्या खूबसूरत स्ट्रोक फाइन लेग के ऊपर से और गेंद सीधे जाके दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। बड़ा स्ट्रोक और इस छक्के के साथ स्कोर में इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 170 पे चला गया है केवल 3 विकेटों के नुकसान पर। और अभी भी 7 विकेट आपके हाथ में। तफ्तीशी बल्लेबाजी डेथ ओवर्स में यहाँ पे चल रही है और दोनों बल्लेबाज इस वक्त ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने की कोशिश करेंगे। फुल टॉस गेंद फिर से मंगवा लीजिएगा बाउंड्री लाइन के बाहर। फिर से चक्का, बैक टू बैक सिक्सेस फ्रॉम द ब्लेड ऑफ ज़हरान रफीक और 19 पे पहुंच चुके केवल 8 गेंदों से। लगातार 2 गेंदों पे 2 छक्के लगाए हैं और एक ही एंड को टारगेट किया है यहाँ से ज़हरान रफीक ने। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन। It's a beauty. It's a beauty to watch. It's a low full toss, magical blow. Great swing off the bat and good use of the wrist as well. Pankaj under some radar, 2 sixes and a boundary, and it goes again. It goes over long off. Oh, that's gone again, and they scored the distance. Just dispatched it close to that Shafek's restaurant. Hope it goes and enjoy something to eat. Another slower one, picks it nicely, picks the slot, and picks the distance. What a magical over. Big one, 3 sixes and a boundary. He is turning it on, Zahid Rafiq. Absolute beauty, absolute carving, absolute expansion of those arms. And you know you're right on the top. You've got all that liberty and freedom to enjoy with free arms. 11.38 means they go to 228. And maybe they get this opportunity to try and break that highest total of 236 by JK11 Shopian. Still 4 overs to go. Tausi batting on 62, Rafiq on 25. Some magical blows and coming on the continuous and constant trots. Rahul Kattal. None for 17 off his 2. All set to start his 3rd. And how many we come up in the last 4 overs? Where the train stops, Tausif waits, will be giving some blows. Ball, slower one, has he knocked him over? I guess yes. Well, he looked a bit late to the reaction and Kattal goes for the big fish. It's a big chase, a man of big value. It's Dr. Tausif Iqbal who goes. A wonderful knock, just watch out how beautifully. That was a slower ball, low full toss. And he was aiming to go over long on, missed out completely and doing the trick. बड़ी विकेट यहाँ से हासिल की है तौसीफ इकबाल की, क्योंकि अब वो डेथ ओवर्स में काफी खतरा नजर आ रहे थे वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम के लिए। एक बड़ी विकेट दिलाने में कामयाब, काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे थे और छक्कों और चौकों की बरसात कर दिया आज तौसीफ इकबाल ने। 62 रन की पारी खेली है अपने टीम के लिए और एक बड़ा लक्ष्य अभी तक खड़ा किया है। 182 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 17वें ओवर का खेल इस समय प्रगति पर, अभी भी 23 गेंदों का खेल आना बाकी। और बाबा जिस प्रकार से कल JK11 शुपया की टीम ने वो 237 रन का टारगेट खड़ा किया था इस टूर्नामेंट की, अगर बात की जाए तो सबसे टॉप पे है वही स्कोर जो JK11 शुपया ने इसी टीम के विरुद्ध यहाँ से खड़ा किया था। क्या आज वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम इस स्कोर से ऊपर जाएगी? और खास बात यह है कि इसी टीम के विरुद्ध वो 237 और इसी टीम के विरुद्ध आज यहाँ से एक बड़ा टोटल मुझे नजर आ रहा है। Indeed. And I believe, having 6 wickets in hand, and especially the way Zahid Rafiq is showcasing his positive intent and aggressive approach, I believe they would be loving to try and break that record of 236 that is coming out as the highest total so far. Let's see how Asif Mansoori just give us a company now. Full toss.
Not able to just try and swing it. He just manages to play it straight down the ground, not for the runs. What actually makes me quite hard to understand on account of the captaincy of Kathua Warriors. They lack the batters of Valley Fresh to enjoy that freedom and liberty. Having those vacant phases in the fielding positions, just letting Tausif and Darswave enjoy their free shots. There you go, picks the slot. It was a slower ball. And eventually long on comes into stop. Just a single they can afford to. And going with 11.21, run rate, that is for sure they will go and pass down 200. But they know that already, the highest total has come out at 226. And I believe this is the best opportunity and stage for Valley Fresh Cold Chain to try and just break that record. At least something they will have, we believe, to cherish about with the outcome of this very House of L Champions League. जी हाँ बिल्कुल, तो इससे बड़ा मौका नहीं मिलने वाला है वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम के लिए। हालांकि पिछले मुकाबले में वो इस प्रकार की बल्लेबाजी नहीं कर पाए इस मैदान पे, लेकिन आज अगर सोहेब थोपा की बात की जाए, तौसीफ इकबाल की बात की जाए, बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन, और अभी भी इसके बाद 3 ओवर का खेल बचा है, और जो रिकॉर्ड यहाँ पे बनाया है 236 रन का JK 11 शुपैया की टीम ने, तो उस रिकॉर्ड को आज ब्रेक कर सकती है यहाँ पे वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम। And Mansoori was giving a heave, missed out completely, dragged on to the back. And good thing about Rahul Kattal is bowling a bit slower, not giving too much of pace to the ball. He knows that you bowl too pace, you go for too many runs. And his idea is working quite well. He's just cutting that pace off. And just 3.1 overs left. On the back foot he goes. There is a fielder in deep. Oh no! Oh no! He slips, and ball wins the race. Well, this is something he can't afford. And you go with this kind of approach in the fielding, definitely you will be counted for too many when you get back to the chase. A boundary to finish. It's all the fault of the fieldsman on that. Watch out! Oh, I believe he slipped badly. And this is something what Valley Fresh will take and count on. दबाव जो है वो बिल्कुल साफ झलकता हुआ यहाँ पर गेंदबाजों के साथ साथ बाकी दीगर खिलाड़ियों पे भी काफ़ी दबाव यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि एक पहाड़ जैसा लक्ष्य यहाँ पे खड़ा किया है वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम ने। 199 रन 4 विकेटों के नुकसान पर अभी भी 3 ओवर का खेल बचा है, यानी कि 18 गेंदों का खेल आना अभी भी बाकी है। और आसिफ मंसूरी नए बल्लेबाज जो 4 पे नाबाद है 3 गेंदों से। जहरान रफीक ने वो पिछले ओवर में 3 गेंदों पे 3 छक्के लगाए थे, छक्कों की हैट्रिक कर दी थी जहरान रफीक ने। और अंतिम 3 ओवर्स में किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे, क्या 230 तक लेके जाएगी यहाँ से वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम, क्योंकि विकेट्स तो काफ़ी है अभी आपके हाथ में, 6 विकेट आपके हाथ में बचे और प्रोजेक्टेड स्कोर 222 के आसपास हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है। और अगर जहरान रफीक स्ट्राइक पे रहे इस बार, छोटी गेंद खेलने में कामयाब हवा में, लेकिन खिलाड़ी पीछे, केवल एक सिंगल मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के इजाफे के साथ 190 बॉल पे लग चुका है, 4 विकेटों के नुकसान पर आरिफ वच्ची नए गेंदबाज। 190 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 17.1 ओवर की गेंदबाजी अभी तक मुकम्मल हो चुकी है। आरिफ वच्ची अगली गेंद के साथ अक्रॉस द लाइन इस गेंद को खेलने की कोशिश, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। गेंद सीधे जाके विकेट कीपर के दास्तानों में, और 16 गेंदों का खेल आना अभी भी बाकी है। Well, I believe there is a bit of a comeback on account of Kathua Warriors. And Arif Vichi, the local boy who's into the last, has been 1 for 25. Let's see what Mansoori looks, just goes, run a ball. And hits it straight down the ground. Chase for Sujal. Diving effort and saving the ball, just crossing over. 2 runs. And eventually in the first match between Sultan Warriors Baramulla, Skid Stars Budgam absolutely fell to that 140. Could not get over the line. They were bundled for around 60 runs. Fantastic bowling by Nadeem, by Azim Rath. He got the man of the match. एक बात बाबा, क्योंकि किसी भी मोमेंट को आप यहाँ से मिस नहीं करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से यही खूबी है हाउस ऑफ एल चैंपियंस लीग। Absolutely. What? See, on that screen, there is a guy, he knows he's on the big screen, and all of a sudden he stops and just gets down. We have got some beautiful visuals all through the pass of this House of Wealth. Rafiq waits now.
27 of 12 is going something blazing. And down the ground again. He's not having that ball properly on the blade, It's all on account, just bowling a bit medium pace. And one thing what Kathua Warriors are lacking, through and through, I would say, not having the great options when it comes to bowl slow. They do bowl medium, they do bowl pace. And this is becoming quite easy for the batters of Velly Fresh Cold Chain to try and hit those magnificent runs. आसिफ मंसूरी को यहाँ से अगर बात की जाए तो जहरान रफीक को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना होगा बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि अगर जहरान रफीक की बात की जाए 13 गेंदों से 28 बना करना बाद अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और अच्छी लय में नजर आ रहे हैं और अंतिम ओवर्स का खेल चल रहा है। और हर साल हजारों लोग गलत इलाज का शिकार होते हैं, वजह वही पुरानी, सही वक्त पे सही डॉक्टर का ना मिलना या सही वक्त पे सही डॉक्टर तक ना पहुंच पाना। अब सोल्यूशन है आपके हाथ में। टेलीप्रैक से कंसल्ट करें देश भर के टॉप डॉक्टर से, कहीं भी कभी भी। तो अभी डाउनलोड करें टेलीप्रैक ऐप। तबीयत खराब है लेकिन हॉस्पिटल तक जाना डिफिकल्ट लग रहा है? डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि हम लेके आए हैं टेलीप्रैक, एक ऐसा स्मार्ट हेल्थ केयर ऐप जहां आप घर बैठे ही टॉप डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशंस कर सकते हैं। घर बैठे ही आप अपने लैब टेस्ट्स भी बुक कर सकते हैं और हाँ, यहाँ आप अपनी मेडिसिन भी इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी सेविंग्स के साथ। तो अभी डाउनलोड करें टेलीप्रैक ऐप। अंतिम 2 ओवर का खेल आना बाकी। 194 रन 4 विकेटों के नुकसान पर वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अभी तक एक बड़ा लक्ष्य खड़ा किया है। अंतिम 12 गेंदों का खेल बचा और देखते हैं अंतिम 12 गेंदों में यहाँ से कितना और रन जोड़ने की कोशिश करेगी वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम। करंट रन रेट की बात की जाए तो 10.78 की औसत से यहाँ पर अभी तक रन बना रही है। सूरज प्रकाश नए गेंदबाज, खराब गेंद और भरपूर नसीहत गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। और बाबा यहाँ से सूरज प्रकाश नए गेंदबाज, मेरे ख्याल से खराब फैसला कैप्टन की जानिब से। Suraj comes in, Suraj goes down. First ball, bang! Look at that. Well, this is a half tracker. Can't bowl. Captain comes in those last slug moments. It's a half tracker for Zahid Rafiq. And you bowl this half tracker. This is all he will say. Thank you. Accepts the challenge and makes the ball go all the way for big 6. 200 का आंकड़ा यहाँ पे मुकम्मल किया है वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम ने। सूरज प्रकाश इस ओवर में अगली मर्तबा फिर से वही गेंद और फिर से उसी दिशा में गेंद को भेज दिया है बल्लेबाज जहरान रफीक ने। ये 5वां छक्का रफीक के बल्ले से। Well, we're on the stage. We're on the stage for 6 sixes. We're on the stage for 6 sixes. Hold on. It's Zahid Rafiq who goes for 5. And he goes for 2 on 2. He knows that this is something he is not going to miss out. This is something he will try and just love to go for all bangs. And he is waiting for the ball 3. Is it going to be knocked over? Is it going to be sent over? Oh, he goes. He might be caught. It is. A lovely catch deep down the ground. And you could see the smiles on Suraj Prakash's face. Now his son, the Suraj, the sun is coming out and is shining brightly with that wicket, I tell you. रन्स कितने भी खर्चे आप यहाँ से फर्क नहीं पड़ने वाला, विकेट मिलेगी तो सेलिब्रेशन बनती है। तो यही सोच लेकर आई है मेरे ख्याल से कठुआ वॉरियर्स की टीम। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो मूवमेंट उसको कैप्चर कर रहे हैं यहाँ से कठुआ वॉरियर्स की टीम और पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को। यहाँ से छक्कों चौकों की यहाँ पे अगर बरसात भी हो जाए, बाद में विकेट ले जाए तो सेलिब्रेशन हर कोई गेंदबाज यहाँ पूरी तरह से दर्शकों को लुत्फानंदोज करते हुए नजर आए हैं। और यही अदा मुझे पसंद आई है कठुआ वॉरियर्स की, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को बदलते हुए देखा है इस टूर्नामेंट में और पूरी तरह से एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले मुकाबले की बात की जाए तो एक बड़ा लक्ष्य खड़ा किया था JK11 शुपया की टीम ने। आज वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम की बात की जाए तो उन्होंने भी एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पे खड़ा किया है। खराब गेंदबाजी लेकिन पूरी तरह से हर किसी मोमेंट को यहाँ पे एंजॉय कर रही है कठुआ वॉरियर्स। Aslan, you won't believe you actually mentioned a word that was barsat, because you know that I have got a close eye on the Bollywood industry. There was a movie by the name of Barsat. It was starred by Bobby Deol, and it was Twinkle Khanna. She was the actress. And that actually, we believe had a good impression, in the cinema, in the theaters. The reason behind, it was beautiful songs, it was beautiful voice,
And that was Kumar Sanu. Kumar actually, Sanu was a sung singer. most of the beautiful songs in that movie, Barsat. Absolutely. So when he did mention that word, I actually could not stop myself from mentioning that beautiful movie Barsat, starring Bobby Deol and Twinkle Khanna. वो लंबे बाल. Yes, exactly. There was Mukesh Khanna as well. बिल्कुल. And I would come out as the father of Bobby Deol in that. He would just take that admission in the college and he would be just, given that kind of treatment. But then he fell in that kind of romantic story. And ultimately, those beautiful songs and beautiful shots, this is what Valley Fresh is all about. जी हाँ बिल्कुल. तो सूरज प्रकाश आखिरी गेंद के साथ वाइड का इशारा और इस वाइड के चलते 210 रन पे पहुंच चुकी है वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम 5 विकेटों के नुकसान पर और अभी भी 5 विकेट आपके हाथ में 7 गेंदों का खेल आना बाकी है. क्या यहां से जेके 11 शुपैया का रिकॉर्ड ब्रेक करेगी वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम? आखिरी गेंद के साथ इस बार गेंद का पीछा किया और खेलने में कामयाब हुए लेकिन केवल एक सिंगल मिलेगा और स्ट्राइक रहेगी शाहिद के पास. Let me tell you about Shahid Ghani. He's a guy who hails from Tukuru, Shopian. He's an absolute, destroyer when he just gets on his song, he gets his momentum going. But 211 for 5, last over to go. So means that if you are there to try and break that record of 236, you got to go and get 26 runs. And hold on, oldie, you are on the big screen, you are caught smoking. Well, not a good fashion. That's why you come here in House of Well Champions League. Please stay cautious. There is the man. Rocking, Boss. dashing, moving, boom, boom. Mr. Jahangir Alam, House of Well Financial Services on the big screen. दिस इज सेल्लो सिटी यारीपुरा का जो है वो बोर्ड कैप्चर कर लिया हमारे कैमरामैन ने और हम फिर से अनाउंस कर रहे हैं कि अगर आप नए पुराने फ़ोन्स खरीदना चाहते हैं तो एक मरतबा ज़रूर आप विज़िट कीजिएगा सेल्लो सिटी यारीपुरा, जहां पे आपको मुनासिब दामों में मोबाइल के साथ साथ वो एक्सेसरीज़ भी आपको मिल जाएंगे. और हमारे बाबा सर ने पिछले रोज़ एक बेहतरीन फ़ोन वहां से ले लिया है तो वहाँ पे दिलेरी दिखाई है खालिद अफरोज ने. Absolutely. Arslan, I would be so grateful to Mr. Khalid Afroz Saab, owner of Cello City out there in Yaripura, opposite JNK Bank. Also owner of House of Wealth Cricket Club. Absolutely. He is also the owner of House of Wealth Cricket Club. So thank you very much, Khalid Afroz, for giving... Oh, directed bullseye! What a great shot from that long off. Never easy to try and aim at all the three stumps, but when you have got a great arm, when you are Shujal Manzoor, nothing can stop you. Shahid goes out in unfortunate fashion, out for 2 up 2, and Valley Fresh lose one move, but it's all in that last over. Watch out how beautifully he had a shy, aiming at long, and damn he goes. छठा झटका लगता हुआ यहाँ से वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम को, हालांकि डायरेक्ट हिट लगी, लांगन से वो डायरेक्ट हिट लगाई थी और सीधे जाके विकेट बिखेर दिए वहां पर खिलाड़ी ने. और इस प्रकार से छठा झटका लगता हुआ 212 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 11.06 की औसत से रन बना रही है वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम. 19.1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल. अंतिम 5 गेंदों का खेल आना बाकी है और देखना होगा इन 5 गेंदों में यहाँ से वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम क्या 5-10 रन बनाने में और कामयाब रहेगी. सलमान हमीद नए बल्लेबाज स्लोवर खेलने में नाकाम, गेंद सीधे जाके विकेट कीपर के दस्तानों में और आखिरी 4 गेंदों का खेल आना बाकी है. राहुल कटल गेंदबाज 3.2 ओवर की गेंदबाजी 25 रन खर्चे और 1 विकेट उनके नाम. क्या दूसरी पारी में इस लक्ष्य को अचीव कर पाएगी कुटवा वेरियर्स की टीम? हालांकि पिछले मुकाबले की बात की जाए तो 100 से पहले ही वो ऑल आउट हुई थी. क्या आज बल्लेबाजी में वो इम्प्रूवमेंट नजर आएगी? क्या आज बल्लेबाजी में सुधार ला सकती है यहाँ पे कुटवा वेरियर्स की टीम? हालांकि जिस प्रकार से हमने पिछले मुकाबले में देखा था तो बल्लेबाजी करने के लिए जब उतरी थी उतने बड़े टारगेट के सामने तो पूरी तरह से जो है बैकफुट पे चली गई थी शुरुआत से ही. लेकिन आज मेरे ख्याल से थोड़ी सी चेंजेस भी नजर आई है इस टीम में, तो थोड़ा सा सुधार लाना होगा आज बल्लेबाजी में. अगर आप यहां से शुरुआत में अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे, शुरुआत अच्छी मिलेगी तो तभी जाके यहां से आपको इस लक्ष्य का पीछा किया जा सकता है. इस बार अच्छा कैच, हालांकि 2-3 टप्पे लगे थे लेकिन अंत में इस कैच को अपने वश में कर लिया और इस प्रकार से ये 7वां झटका लगता हुआ वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम को. Doesn't matter, if you have
some more blows in the last over. You know that you are done already, down to that, more than 200. Beautiful safe hands. On the third attempt. It looked so difficult, but he just had his control back. And we give the clear view. 1, 2, 3, fourth chance. Fourth try and fourth attempt, he got to the batter. Think mobile. Think Solucity. रन्स तो बनते रहेंगे, आपका पैसा कब बनेगा? जाने के लिए कांटेक्ट करें हाउस ऑफ वेल्थ को। Nextcraft Consultants are your trusted partner in engineering, architectural, and designing services. We turn your vision into reality. At Nextcraft Consultants, we believe that every dream home starts with a great design. Our dedicated team works closely with you. We pride ourselves on our attention to detail, creating spaces that not only meet your needs, but also reflect your personal style. With our commitment to excellence, we will bring... And waiting to see who walks down. And gives company to Mohammad Asif Mansoori, who's batting on 9 of 10, just goes fraction less. Run a ball. He's a left-hander. And only 2 balls left. And where the train stops. And he must be thinking to try and go for bang. He knows nothing to lose, but he can gain too much. Waits for Katal. Ulta swings well in the gaps. 1 bounce, over long on, 4 runs. This is Salman. And he is absolutely having a juicy full toss and a lovely way to put it off. Watch out. And just bowling a full toss at this moment, knowing that these are the last balls of the first innings. You are axing at your own feet. Round the stumps now, we come with the last ball. And just onto the back foot. Cuts it beautifully, should think for 2. And there they are. So they're coming back for the 2 more runs. So they finish at 219 for 7 in their allotted. 20 over. Salman not out on 6. And he has Asif Mansoori on the other side. So 220. It's going to be the final target to be chased down by Kathua Warriors. The name is Warriors. Then they come out as real Warriors. And will they fight out and they showcase their real fighting spirits as a warrior does in war? हर साल हजारों लोग गलत इलाज का शिकार होते हैं। वजह वही पुरानी, सही वक्त पे सही डॉक्टर का ना मिलना या सही वक्त पे सही डॉक्टर तक ना पहुंच पाना। अब सॉल्यूशन है आपके हाथ में। टेलीप्रैक से कंसल्ट करें देश भर के टॉप डॉक्टर से, कहीं भी कभी भी। तो अभी डाउनलोड करें टेलीप्रैक ऐप। तबीयत खराब है लेकिन हॉस्पिटल तक जाना डिफिकल्ट लग रहा है? डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि हम लेके आए हैं टेलीप्रैक, एक ऐसा स्मार्ट हेल्थ केयर ऐप जहां आप घर बैठे ही टॉप डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशंस कर सकते हैं। घर बैठे ही आप अपने लैब टेस्ट्स भी बुक कर सकते हैं और हाँ, यहाँ आप अपनी मेडिसिन भी इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी सेविंग्स के साथ। तो अभी डाउनलोड करें टेलीप्रैक ऐप।
हेलो टेस्टिंग, हेलो टेस्टिंग, कोई मुझे सुन रहा है क्या? सलमान भैया आजा, सलमान भैया आजा। आज थोड़ा स्लो था ट्रैक, धूप मत निकली।
salam. Tuş olsun ki. Atos भरपूर मदद में जायद बेनोस बड़े उन्हें मदद कर आने रोहित Madam coming over. Okay, play. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to the chase. A mammoth total 220 for Kathua Warriors. Rohit Badwal and Samir, two opening batters. Kites it lovely. Velly fresh. They're playing the last match of the tournament. They've already lost 3. Might will love to just go with something in the box to cheer about. And Dr. Tausif Iqbal, the lone slips. Third man stands a bit wide. Point cover, extra cover mid-off. Sohail goes on the rise. He wants to play it, and it's never going to be an easy task, remind you. Kathua Warriors, even though they bring some locals today in the lineup. Like so, if we could see, or if Vachi is there. Sujil Anderson, Sujil Manzoor, bowled quite well, impressive. And could have been a catch. Dive, but not to the best. And was pacey. And Samir got a tickle and just making it pass down to the left of Soeb Dar, the captain and the keeper. And it goes for the first boundary. And was out of the reach. Very far, even though he made his full and dive to the left. And the idea from Kathua Warriors should be trying to utilize those local lads up front in the chase, like Safari Vachi, like Sujil Anderson. The important thing about Sujil, what I love the most, is being watched by his grandfather, Mr. Muhammad Akram. He is a very, very great fan of the game of cricket. So slight changes. Mir Arif, the owner of the side, Velly Fresh, stands at the short leg. Up in the circle. Watchful. Samir, you look at his size, he's very big. And if you try and look on every cricket nation internationally, from Pakistan, you would go for Azam Khan, Sharjil Khan. From India, you would go, remember, Ramesh Pawar. He would be actually a bowler, but he would just have got this kind of, we believe, size. Down the leg stump, they're appealing, but umpire says no.
Devin Bravo, there was from the West Indies. Pollard also comes with the same bulk of size. Jesse Ryder from New Zealand. And these are the cricketers at international level who carried big size. And also the biggest one, the heaviest one nowadays, that comes from the West Indies. That's Cornwall, I believe. He's the heaviest man. And what international cricket has watched so far. And he has been the man who has already got a double hundred. Very rare you will find. He also bowls a bit. He's quite a handy all-rounder. There was one more from Namibia. I remember, rather that was from Bermuda, who took the catch off, I believe, against India in that World Cup, if either Sachin or Sehwag. Yes, he was in the slips, that's for sure, but I'm not remembering the name, but that was for sure. It was from India. And when he took that catch, he ran all on the ground. And he could not believe that he took that wonderful flying catch. And he was trying to follow the ball, guided down to the third man. So far, it has come out a big over in the form of some extra, chasing 220. It's 9 for 1. It's 9 for none. Think mobile. Think Solucity. विकेट्स गिरते रहेंगे, लेकिन आपके पैसे को गिरने न देगा हाउस ऑफ वेल्थ। रन्स तो बनते रहेंगे, आपका पैसा कब बनेगा? जाने के लिए कांटेक्ट करें हाउस ऑफ वेल्थ को। And I believe that was the catch of Robin Uthappa, Robbie. Required run rate over 11. It's a tough case. Just alone slips in place. A big gap between the keeper. Normally you will have around 4 meters, 3 meters gap. It's around 7-8 meters between the two. Samir. Bats in 4 or 5. And he waits for Fazandar. Thank you very much, Shoaib Mohammed, coming up with the proper response and the name. That was Devin Leverock from Bermuda. Devin Leverock, that big fella. Thank you for this very, very exact update. I believe that was 2003 World Cup. You know, a long way has passed, a big time, around 22 years. And he pulls well. And makes sure he hits it to the right of that mid-on rather. And it goes quick and goes for 4 runs. Lovely shot from Samir. Second boundary to this big man. Big man Samir, the local guy, is counting. That flow, the swing. He knows that it's power play on. Fielders inside the circle. Once you just made the ball pass through, that is not going to be stopped. Ah, chipped in. Chips in here. Shahid Ghani. Oh, what are you doing, boy? Goodness me, what's that? What is that? Well. Two fielders, Shahid says it's all me. And finally, he lets it fall down. And go back to that Abu Dubai. It was Chris Gale and it was Saeed Ajmal and Shoaib Malik. Same happened there. Between Salman and Shahid Ghani. Catch has been gone down, dropped. This way, it's not going to come out good fashion for Valley Fresh Cold Chain fieldsmen. A lot of shouts
Anguish moments. Captain just showing anger. Up on the pad. Up goes the finger. Javed Daryal rather is Arif. Beg your pardon, correction. He was hit on the back leg. He was trying to guide it. It kept low, in line, pitching line, going to hit the stumps. And the first blow, Fazan Dar strikes. And Rohit goes. It's 14 for 1. That is Chef X for you. Facilities available for you to enjoy anything to eat. And Zahid. And H. Down to the third man. Will find a single. Finishes in number 2. It's 15 for 1. Alexander Reis Ahmed. And he makes a request that he share the first post and tagged 5 people. He says that he has the right to be awarded as a fan of the match. Well, it can be done by the management committee. They are looking after it. And it was screens. You got once again Jahangir Alam, owner of House of Wealth Financial Services, title sponsor. And he is always moving. What a take. Down the leg stump. It's a wide ball. Sailwani into second now. And I believe with this approach, you look quite slow. You look quite defensive. You go with 8 runs per over. You got to require. Just go past 11. There has to be a positive approach, aggressive approach. 2 local guys. Still making no proper connections. There you go. I believe some guests alongside. He's a smiling guy. And he did come up that you need to go energetic. You need to bring smiles. And he says that it's all the secret behind his success. Smiling, energy, and living in the dream. Good ball. Short of land. Wants to guide. No connection. Sailwani bowling furious pace. Thank you. A lot of people, they want to know, they want to see, they want to meet this guy. Now he's wet to a screen. The man all in black in between the two. With that goggles on, I believe some guests have come from, I believe, out of the station. Again, beautiful ball. Pitch, unplayable. And got him beaten outside off stump. And again, this is not the approach. And again, walking beautifully. His style is something that's making this tournament eye-catching. And his guest is waving his hand, just knows that he's on the big screen, Arslan. हंसना मुस्कुराना और हंसाना तो इनका काम है मिस्टर जहांगीर आलम का। और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से मुंबई में शाहरुख खान का सिक्का चलता है और उसी हिसाब से हाउस ऑफ वेल्थ चैंपियंस लीग में अगर किसी का सिक्का चलता है तो वो एक केवल इंसान मिस्टर जहांगीर आलम, जिस प्रकार से आज उनका नाम उरूज पे है और किस प्रकार से 4 चांद लगा दिया है इस टूर्नामेंट को, तो जहांगीर आलम को कौन यहाँ पे बोल सकता है। तीसरे ओवर का खेल
प्रगति पर 16 रन बनाए हैं कुठवा वेरियर्स की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर। और रिकॉर्ड रन रेट की बात की जाए तो काफी ज्यादा दरकार इस बार, कदमों का इस्तेमाल लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। और एक बड़ा लक्ष्य आज भी यहाँ से चेस करना है कुठवा वेरियर्स की टीम को। पहले मुकाबले में 237 रन का टारगेट उन्हें चेस करना था और आज के मुकाबले में 219 रन का एक बड़ा लक्ष्य। और किस प्रकार से हमारे कैमरामैन आज अपने काम फराइज अंजाम दे रहा। स्पैरो मैना को यहाँ से फोकस कर रहे हैं हमारे कैमरामैन और कितना खूबसूरत काम अंजाम दे रहे हैं यहाँ पर। 3 ओवर का जो खेल है वो मुकम्मल हो चुका है। शुरुआत से ही दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाजों के ऊपर। हर साल हजारों लोग गलत इलाज का शिकार होते हैं, वजह वही पुरानी, सही वक्त पे सही डॉक्टर का ना मिलना या सही वक्त पे सही डॉक्टर तक ना पहुंच पाना। अब सोल्यूशन है आपके हाथ में। टेलीप्रैक से कंसल्ट करें देश भर के टॉप डॉक्टर से, कहीं भी कभी भी। तो अभी डाउनलोड करें टेलीप्रैक ऐप। Yes. 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल मुकम्मल। 102 गेंदों में 204 रनों की दरकार मुकाबले को जीतने के लिए। करंट रन रेट की बात की जाए तो 5.33 की औसत से यहाँ पे रन्स बना रही है कुठवा वेरियर्स की टीम। और एक there he goes once again, beautiful catch. My word, focused. And now the parent with all his kids enjoying on the big screen. And House of Wealth Mutual Funds close to that signing board. And owner goes now with the ball, Larif Mir. And a good time with the bat. Flight ball just thrashes it. Finds the cover fielder inside the circle. Once again, great love, great appreciation. Thanks a bunch, thanks a million to the Cello City, Yaripura. Maybe he might be listening and watching. Swings it beautifully. Again, just not able to just pass that square leg fielder. And if you're looking to try and just buy new phones, sell your old ones, you are trying to buy old phones as well at affordable prices, you can go to Yaripura close to JNK Bank and you will find Cello City. No effort at all. Just on the bounce, just waits for the ball to try and come close. It looks quite casual efforts, from both sides. No proper approaches in the fielding skills. Just going quite simple, easy. And they know it just like, it's just like a cakewalk for them. And down the ground, he takes the aerial route, goes over the covers and goes for 4. Who knows? Shahid and Samir, the rider destroyer, he comes. And they give some pain in the neck to the side of Velly Fresh. Flight ball down the ground, putting the shoes on and smashing it over covers for 4 runs. Once again, up is gone. He is not able to pick the gap. He was going down the ground, just could not find that right elevation. Straight to the short point, and he makes no mistake. So owner has finally the wicket he owns. There he goes. The bat actually twisted in his hands, and number 2 goes down for Kathua Warriors. पहला झटका मिलता हुआ यहाँ से टीम के ऑनर मिस्टर आरिफ को, और ये दूसरा झटका इस टीम का कुठवा वेरियर्स का, और बैक टू बैक यहाँ पे विकेट्स गिरते रहे हैं और शुरुआती 2 झटके बल्लेबाजों के ऊपर काफ़ी प्रेशर नज़र आ रहा है। हालांकि बाबा एक बात तो मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, जिस प्रकार से पिछले मुकाबले में भी आपने देखा और आज के मुकाबले में भी आपने देखा है कि एक बड़ा लक्ष्य पहली पारी में खड़ा करना ये काफ़ी हद तक ओवर स्मार्ट कर देता है बाकी खिलाड़ियों को। हालांकि पिछले ओवर में वो लांगान पे वो कैच का मौका बना था और बिल्कुल कोई एफर्ट नहीं दिखाया वहाँ पे, खिलाड़ी ने कोई कोशिश नहीं की और टप्पे पे गेंद को रोका है जहाँ से विकेट मिलना चाहिए था, और बिल्कुल कोई कोशिश नहीं और जाने दिया है उस गेंद को। 97 गेंदे और 199 रनों की दरकार मुकाबले को जीतने के लिए। नए बल्लेबाज आरिफ वच्ची आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए,
और देखना होगा आरिफ वच्ची आज किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया है वैली फ्रेश। Think mobile. Think Solucity. विकेट्स गिरते रहेंगे, लेकिन आपके पैसे को गिरने न देगा हाउस ऑफ वेल्थ। रन्स तो बनते रहेंगे, आपका पैसा कब बनेगा? जाने के लिए कांटेक्ट करें हाउस ऑफ वेल्थ को। Think mobile. Think Solucity. पांचवें ओवर का खेल अब जाके शुरू हो चुका है। मोहम्मद आसिफ मंसूरी नए गेंदबाज। पारी का ये पांचवा ओवर और 198 रनों की अभी भी दरकार मुकाबले को जीतने के लिए। केवल 22 रन बनाए हैं और 2 विकेट गंवाए यहाँ से कठुआ वेरियर्स ने। आज फिर यहाँ से खराब शुरुआत मिली है कठुआ वेरियर्स की टीम को। एक बड़ा लक्ष्य का पीछा करते करते अभी तक 2 विकेट गंवाए, शुरुआत में केवल 22 रन बनाए हैं। 4.1 ओवर की गेंदबाजी आसिफ मंसूरी अपने पहले ओवर के साथ। आरिफ वच्ची नए बल्लेबाज, केवल 1 रन अभी तक। आरिफ वच्ची स्ट्राइक पे रहेंगे। 3 गेंदों का अभी तक सामना किया, केवल 1 रन बनाया। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पीछे हटकर गेंद को खेलना चाहते थे। और ये देख लीजिए खूबसूरत दृश्य इस मैदान का। मिस्टर जहांगीर आलम को पूरी तरह से घेर लिया है जो यहाँ की मैनेजमेंट है, क्योंकि अच्छा पावर कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ पर जहांगीर आलम के साथ। लेकिन इस बार खूबसूरत स्ट्रोक पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। Good timing on that shot. Late, eyes on the ball. Mohammad Asif Mansoori, left arm spin. Good ball. Good comeback after being hit for a 4. Think mobile. Think Solucity. Last ball of the 5th. Hitting is on his pads and he goes quite easy and simple down to that fine leg for a single. 5 from the over, 5 gone. It's 27 for 2. Think mobile. Think Solucity. And I would say autograph, please. My word. And enjoying smiles. He knows he's on the big screen now, I guess. Arslan, when it's just like a celebrity, I believe you would be also looking for that autograph, please, signed in. Some kids as well, close. And he's a busy man. Jahangir Alam, always working on his phone, always talking to the people, discussing important things. I believe this is a way to live your life. Beautiful ball, nipping in through. And Arif had no plans whatsoever. He was beaten. Luckily that ball was string down the leg. 27 for 2. And also with now promise, second edition. It's going to about kickstart in the Jammu region in the approaching winters. And I was talking to Jahangir Alam. He did mention and promise that there will be something more and better than this, some more features, some more elements. Oh, swings! That's gone! Has it carried all the way? And umpire goes with both his hands up in there. It's a 6. And that's what they need to go, but from both the sides. Pull power, pull muscle. The best thing, he did reach to the pitch of the ball. You know when those big size players hit from the right part of the blade,
make the ball dispatch and land out of the ground. He can bring that power, and that was a living example. There's a boundary as well. Followed. There you could see. Good amount of time for this man to go onto the back foot. Swings over, long off. Goes. 1, 2, 3, 4 bounces. Well, I believe Arif Mir should not try and bowl at this moment because he's bowling too much of flight and is giving easy pickings to the likes of this man, Samir. There you see, straight down the ground. Easy pickings. And you never know, you can have the different story of the game as well. This time, he goes again. There's Shahid Ghani running quite on and gets the stop of the ball. And not direct it. And maybe we have a third umpire into the engagement. And it looks to me touch and go. Shahid Ghani, you all know he has got a strong arm right from the deep long on. And he just aimed all the 3 stumps and he got us right shackles through. Let's see what comes out, the decision from the third umpire. It looks touch and go. There you see, even though fumbles, but gets back onto the top of the ball. Had a shy. And looks inside and looks safe. And looks safe as a house. But in that, I would say it was a wonderful throw from Shahid Ghani. Last ball of the power play. It's 42 for 2. Rather, it was the last ball of the power play. So 6 done with the help of 5 extras. It's 44 for 2. आप भी पीछे ही हो जाओ, भाग के 6 ओवर का खेल मुकम्मल। 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 84 गेंदों में 186 रनों की दरकार मुकाबले को जीतने के लिए। और समीर की बात की जाए तो पिछले ओवर में काफी सारे रन उन्होंने जोड़े हैं अपने टीम के लिए। 1 छक्का और 2 चौके लगाए हैं समीर ने। बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन। अब जाके 7वें ओवर की शुरुआत आसिफ मंजूरी अपने दूसरे ओवर के साथ और पारी का ये 7वां ओवर इस समय प्रगति पर। अभी भी काफ़ी सारे रनों की दरकार मुकाबले को जीतने के लिए। और रिकॉर्ड रन रेट की बात की जाए तो तकरीबन 12.72 की औसत से यहाँ पे रन दरकार मुकाबले को जीतने के लिए। केवल 2 विकेट अभी तक गंवाए हैं। शुरुआत उतनी अच्छी मिली नहीं यहाँ से कठुआ वॉरियर्स की टीम को जिस शुरुआत की दरकार थी। हालांकि इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना था और मेरे ख्याल से अगर 60-70 रन की शुरुआत मिल जाती सलामी बल्लेबाजों के विरुद्ध तो तभी जाके इस लक्ष्य का पीछा किया जा सकता था। लेकिन खराब शुरुआत और अब जाके यहाँ से पार्टनरशिप को बिल्ड करना होगा। और इस बार खूबसूरत स्ट्रोक स्वीप के अंदाज में इस गेंद को खेलने में कामयाब। कोई खिलाड़ी उस ओर तैनात नहीं और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। समीर के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका और इस चौके के साथ वो 30 पे पहुंचे। केवल 16 गेंदों का उन्होंने सामना किया। तेज रफ्तारी के साथ वो रनों को बढ़ाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं अपनी टीम के लिए। अगली गेंद कट करने की कोशिश लेकिन काफी पीछे चले गए थे बल्लेबाज समीर। 17 गेंदों से 30 रन बना करना बाद जिसमें 1 छक्का और 4 चौके वो अभी तक जड़ चुके हैं अपनी टीम के लिए। 49 विकेटों के नुकसान पर इस बार कट करने में कामयाब। खिलाड़ी गेंद के पीछे पहला रन मुकम्मल किया। और खास बात रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत बढ़िया है। तालमेल बहुत बढ़िया है दोनों बल्लेबाजों के बीच। हालांकि समीर तो जिस प्रकार से दूर लगा रहे हैं विकेटों के बीच और पूरी तरह से फिट नजर आ रहे हैं। इस बार एक और अच्छी गेंद अंदरूनी भाग लगा और गेंद फाइन लेग क्षेत्र में चली गई। पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए दौड़ पड़े और आसानी के साथ यहाँ पे दूसरा रन भी मुकम्मल किया और इन 2 रनों के साथ 50 का आंकड़ा छू लिया है यहाँ से कठुआ वॉरियर्स की टीम ने। 52 रन 2 विकेटों के नुकसान पर और 19 गेंदों से 31 रनों की पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। 7 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और अभी भी 12.92 की औसत से यहाँ पे रन दरकार। हालांकि एक धीमी शुरुआत लेकिन रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा। एक खूबसूरत सा चेहरा स्क्रीन के सामने और शायद पता नहीं उनको कि मैं ऑन स्क्रीन पे इस वक्त
नजर तो वो इधर उधर घुमा रहा है, लेकिन स्क्रीन पे उनकी नजर नहीं पड़ रही है, क्योंकि तब जाके उनकी फीलिंग कुछ अलग ही होती है अगर स्क्रीन पे उनकी नजर पड़ती। एक खूबसूरत चेहरा, नन्ना सा। और अब जाके 8वें ओवर की शुरुआत। आरिफ मीर गेंदबाजी के लिए आए हैं। 2 ओवर की गेंदबाजी, 23 रन और एक सफलता आरिफ मीर के नाम। 78 गेंदे, 168 रनों की दरकार मुकाबले को जीतने के लिए। समीर और आरिफ वच्ची के बीच अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड होती हुई, तकरीबन 34 रनों की पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। समीर 31 पे नाबाद, 18 गेंदों से आरिफ वच्ची ने 10 बनाए हैं। 12 गेंदों से पहली गेंद पीछे हटकर गेंद को ड्राइव किया है। 1 रन बनाने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर 54 रन। 2 विकेटों के नुकसान पर आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला। पहला मुकाबला सुल्तान वेरियर्स बारामूला वर्सेस सिक्का स्टार्स बड़गाम के विरुद्ध खेला गया था, जिसमें जीत दर्ज की है आज सुल्तान वेरियर्स बारामूला की टीम ने। इस बार क्या खूबसूरत स्ट्रोक, खिलाड़ी गेंद के पीछे लेकिन नहीं रोक पाएंगे। गोली की मानद गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई है 4 रन के लिए। एक और खूबसूरत स्ट्रोक आरिफ वच्ची के बल्ले से निकलता हुआ। और सुल्तान वेरियर्स बारामूला की टीम इस टूर्नामेंट में आज दूसरा मुकाबला वो खेली है और दोनों मुकाबले यहाँ से जीते हैं। सिक्का स्टार्स बड़गाम की टीम ने वो इस बार कदमों का इस्तेमाल, हवा में गेंद, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक खिलाड़ी। और 1 रन बनाने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर 58 पे पहुंच चुका है। 2 विकेटों के नुकसान पर 75 गेंदों में 162 रनों की दरकार। मीर आरिफ अपने तीसरे ओवर के साथ फिर से छोटी गेंद कट करने में कामयाब, लेकिन लॉन्ग अप पर खिलाड़ी तैनात, उनसे गेंद रुकी नहीं और चीरती हुई चली गई है 4 रन के लिए। मिसफील्ड होता हुआ यहां से और गेंद सीधे जाके सीमा रेखा से बाहर, जहां पे केवल 1 रन आना चाहिए था और वहां पे गेंद 4 रन के लिए चली गई है। इस चौके के साथ स्कोर में इजाफा और रनों की रफ्तार को लगातार बढ़ाते हुए नजर आ रही है दोनों बल्लेबाज। इस बार हवा में गेंद, विकेट कीपर गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच, और इस प्रकार से ये तीसरा झटका लगता हुआ समीर को वापस जाना होगा। 36 रन बनाकर समीर निराश कदमों के साथ वापस। और बहरहाल मीर आरिफ के नाम ये दूसरी सफलता। अपने तीसरे ओवर में 2.5 ओवर की गेंदबाजी, 33 रन और दूसरी विकेट टीम के ऑनर मीर आरिफ के नाम। अभी भी 73 गेंदों में 173 रनों की दरकार मुकाबले को जीतने के लिए। और 3 विकेट यहां से गंवाई है कठुआ वेरियर्स की टीम ने। अब काफ़ी मुश्किल यहाँ पे नज़र आ रहा है कठुआ वेरियर्स की टीम के लिए इस मुकाबले को जीतना, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट में लगातार इजाफा नज़र आता हुआ। और ये देख लीजिए मुस्कुराता हुआ चेहरा मीर आरिफ का विकेट लेने के बाद। हालांकि फाइन लेग पर खिलाड़ी तैनात थे, वो भी आए थे कैच करने के लिए, लेकिन विकेट कीपर ने उस कैच को अपने वश में कर लिया है। इस प्रकार से ये तीसरा झटका लगता हुआ कठुआ वेरियर्स की टीम को। 7.5 ओवर की गेंदबाजी, 62 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर 73 गेंदों में 158 रनों की दरकार मुकाबले को जीतने के लिए। राहुल कटल नए बल्लेबाज बीच मैदान में प्रवेश कर चुके हैं। आरिफ वच्ची 15 पे नाबाद और राहुल कटल अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और एक लंबी पारी खेलनी होगी यहाँ पे किसी बल्लेबाज को, तभी जाके इस लक्ष्य का पीछा किया जा सकता है। और तारीफ करनी होगी यहाँ पर गेंदबाजों की, जिस सटीक लाइन के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हो और लगातार बैक टू बैक विकेट्स यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं अपने टीम के लिए। 7.5 ओवर की गेंदबाजी, अंतिम गेंद इस बार डिफेंसिव अंदाज के साथ इस गेंद को खेला है। मैदान क्षेत्र में गेंद चली गई है जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते, और राहुल कटल ने इस 1 रन के साथ अपना खाता खोला है। 8 ओवर का खेल मुकम्मल, 63 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर कठुआ वेरियर्स का स्कोर। अभी भी 13.08 की औसत से यहाँ पे रन दरकार मुकाबले को जीतने के लिए। और पिछले मुकाबले की बात की जाए तो उससे कई बेहतरी आज नजर आ रही है बल्लेबाजी में। Tough situation now for Kathua Warriors. Not producing that fight. Now Tausif Iqbal comes into ball. Bowling is first. He comes as a dot ball.
Rahul Kattal now joins. And still going with the runs in the form of ones and twos, bringing no attack into the game. And I believe it's all they believe in, try and go for that batting practice play with a full quota of 20 overs. It's 64 for 3. It's a match number 13 of House of Well Champions League. Off the back footy goal, just short. Chucked and controlled a shot on that moment. Arif Vachi, the only man who batted brilliantly in that first match as well. And he's showcasing all his mettle again in the second match. Very easy. With this approach, I believe Valley Fresh Cold Chain would love to try and just finish the game and bringing spinners quite often, quite regular. When there is no attack from the batting unit, it's making the bowling unit quite fresh and quite easy. And gives them the liberty to try and bring in all their, we believe, spin options. And a dot ball to finish. Just 2 from it. 9 gone. It's 65 for 3. And his boy is on the screen. And he doesn't know. Arif Mir into the last over of his quota. 2 for 34. He's having a good day with the ball. Let's see how he finishes now. And across the line goes for a peel, and he picks the finger. Raises the finger. Arif Vachi goes. Wet for the slog, wet for the cross bat, missed out completely. And that was good enough to try and see him coming down and the ball pitching in line. Impact, it's in line. This will give us a clear view. Oh, that was absolutely dead plumb. Most important thing, it hit him onto that back leg. And Arif was having no problems whatsoever to raise his right finger up. And Arif goes. Arif gives the signal. And Arif has the wicket. My word, what is that? Arif Mir bowling. Arif Vachi goes. Arif the umpire raises the finger. It's all Arif. It's all Arif trio. Goodness me. I believe it becomes a history. If you look, if you watch, if you see, the bowler is Arif. The batter is Arif. The umpire is Arif. And it's only possible. And it's House of Well Champions League, Laktipura. It's Sujil Anderson, a local boy. And is he going to come out and just finish at the top? Known for his smashing skills. Waits for the first ball. Punches it straight down to the covers where Tausifik ball fields. Arif Mir, the owner of Valley Fresh, is having a brilliant spell. Swings it down. There's a elegant play, just a single. Sujil. Once again, I do mention he's being watched by his grandfather, Mr. Mohammad Akram. He has been here throughout the day. He was waiting for his grandson to come and just do his performance. And even though he had a good ball, and now he needs to come out and showcase some performance with the bat and make his grandfather proud. And down the track, wicket keeper. I guess it might be one more. And he is going to be having the number 4th if it is okay. It's third umpire in this engagement now. And the first impression is he might be off the crease.
Because I could see closely Javed Daryal just, verbally saying yes, he is. But still, to get that proper confirmation, he goes to the third umpire. Oh, he's gone. He's a goner. He is a goner. And out goes the signal. And Arif Mir, the owner, is owning this bowling performance. 4 wickets to him. He has got 1 ball left. Maybe he comes the first man who has the 5-wicket haul. जी हाँ, बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन आज टीम के ऑनर आरिफ मीर की जानिब से। आज 4 विकेट यहाँ से प्राप्त किए हैं मिस्टर आरिफ ने, और अभी भी एक गेंद का आना बाकी है, तो हो सकता है वो यहाँ से एक और विकेट ले पाएंगे और इस टूर्नामेंट के वो पहले गेंदबाज बनेंगे जो किसी मैच में 5 विकेट का एजाज़ हासिल करने में, क्या आज यहाँ से आरिफ मीर वो एजाज़ अपने नाम कर पाएंगे, देखना होगा। आखिरी गेंद उनके कोटे की, लगातार वो गेंदबाजी कर रहे हैं। 3.5 ओवर की गेंदबाजी, 35 रन, 4 विकेट अभी तक उन्होंने हासिल किए हैं, और अभी भी एक गेंद का आना इस ओवर में बाकी है। और नए बल्लेबाज बीच मैदान की ओर, और रिक्वायर्ड रन रेट 15.25 की औसत से यहाँ पे रन दरकार 15.15, और लगातार बढ़ोतरी नजर आ रही है रिक्वायर्ड रन रेट में। और आधी टीम तो मैदान छोड़कर वापस चली गई है केवल 67 के इनफरादी स्कोर पर। तो सेम कंडीशन पहले मुकाबले की अगर बात की जाए तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी नज़र आ रही है उस मुकाबले की अगर बात की जाए तो। एक बड़े मार्जिन के साथ वो पहला मुकाबला यहाँ से हारी थी, और आज भी ऐसा देखने को मिल रहा है। आखिरी गेंद और अच्छी गेंद, डिफेंसिव अंदाज के साथ इस गेंद को खेला है, और इस प्रकार से आरिफ मीर का कोटा मुकम्मल। 4 ओवर की गेंदबाजी, 35 रन, 4 विकेट उनके नाम। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, और मेरे ख्याल से आज के मैच के हीरो रहेंगे टीम के ऑनर मिस्टर आरिफ। जो गेंदबाजी आज उन्होंने यहाँ पे दिखाई है, जिस प्रकार से आज उन्होंने गेंदबाजी की है, वो 4 विकेट हासिल किए हैं आज अपनी गेंदबाजी में। बहरहाल 10 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 67 रन बनाए हैं कठुआ वेरियर्स की टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर, और धीमी शुरुआत, काफ़ी सारे विकेट्स गंवाए यहाँ से कठुआ वेरियर्स की टीम ने। और अभी भी 154 रनों की दरकार, केवल 60 गेंदों का खेल आना बाकी है। रिक्वायर्ड रन रेट लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और अब जाके काफ़ी मुश्किल है यहाँ से इस मुकाबले को जीतना कठुआ वेरियर्स की टीम के लिए। पहली गेंद ड्राइव करने में कामयाब, उतनी अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, और अपने टीम के लिए 4 रन बचाने में कामयाब। खूबसूरती के साथ वहाँ पे ड्राइव लगाई है और उस गेंद को रोकने में कामयाब हुए। 11वें ओवर की दूसरी गेंद, तौसीफ इकबाल की बात की जाए तो आज बल्लेबाजी भी बेहतरीन, उन्होंने शायद 72 रन का योगदान दिया है आज इस टीम में। वो छक्कों और चौकों की बरसात कर दी आज तौसीफ ने, और देखना होगा आज गेंदबाजी में किस प्रकार की वो गेंदबाजी करेंगे, क्या विकेट ले पाएंगे अपने टीम के लिए। अभी तक विकेटलेस रहे, 1.2 ओवर की गेंदबाजी में केवल 2 रन उन्होंने, 3 रन उन्होंने खर्चे हैं। सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी और पूरी तरह से दबाव बनाया हुआ है बल्लेबाजों के ऊपर। सन्नी नए बल्लेबाज और सुजील 2 रन बना करना बाद, सन्नी ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला है। इस ओवर की अगली गेंद और मैदान क्षेत्र में गेंद को धकेला है उस ओवर खिलाड़ी, रन बनाने की गुंजाइश नहीं। आहिस्ता आहिस्ता से ये मुकाबला बिल्कुल वैली फ्रेश कोल्ड चेन के खाते में चला जा रहा है, क्योंकि अब काफ़ी सारे रनों की दरकार अभी भी मुकाबले को जीतने के लिए। एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया था पहली पारी में वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम ने। 219 रन की पारी उन्होंने खेली थी, और 220 रन दरकार यहाँ से मुकाबले को जीतने के लिए कठुआ वेरियर्स की टीम को। हालांकि अगर बात की जाए तो कठुआ वेरियर्स का आज दूसरा मुकाबला, पहला मुकाबला जेके रमन शुपैया की टीम के साथ वो हारी थी, और देखना होगा आज इस मुकाबले में क्या वो यहाँ से जीत दर्ज कर पाएंगे। लेकिन काफ़ी मुश्किल लग रहा है क्योंकि रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा, और यहाँ से बल्लेबाजी करनी होगी, रनों की रफ्तार को लगातार बढ़ाना होगा। अब यहाँ से सिंगल्स डबल्स के सहारे आप इस मुकाबले को नहीं जीत सकते हैं। 54 गेंदों में 152 रनों की दरकार मुकाबले को जीतने के लिए। 11 ओवर का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है, अब केवल 9 ओवर का खेल बचा है, और 17 की औसत से यहाँ पे रन दरकार मुकाबले को जीतने के लिए। आधी टीम तो मैदान छोड़कर वापस चली गई है, केवल 5 विकेट आपके हाथ में बचे हैं।
तो काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है यहाँ से कठुआ वेरियर्स की टीम के लिए इस मुकाबले को जीत जाना। तबीयत खराब है लेकिन हॉस्पिटल तक जाना डिफिकल्ट लग रहा है, डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि हम लेके आए हैं टेलीप्रेक, एक ऐसा स्मार्ट हेल्थ केयर ऐप जहां आप घर बैठे ही टॉप डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशंस कर सकते हैं। घर बैठे ही आप अपने लैब टेस्ट्स भी बुक कर सकते हैं और हाँ, यहाँ आप अपनी मेडिसिन भी इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी सेविंग्स के साथ। तो अभी डाउनलोड करें टेलीप्रेक ऐप। Think mobile. Think Solucity. विकेट्स गिरते रहेंगे, लेकिन आपके पैसे को गिरने न देगा हाउस ऑफ वेल्थ। Again, just defensive approach. Required run rate now about to touch 18. So I was talking about Sujil Anderson, a local guy, being watched by his local public. He knows that he is having a big eye on his performance. It actually goes through his mind. And drives it handsomely. Lovely shot. Going through. Might go. And stopped quite well at the long. Saini.
He's yet to open his account. He has been there for 5 balls. Still no approach of winning. No approach of attack. And Baton gone through, even though the wicketkeeper could not. It nipped in through. That's gone for 4 byes. And Salman cannot believe it. It's quite hard as a bowler when the runs are going against him in that fashion. There we go. It swung late. It's called a late swing. These are quite, we believe intention is to see and watch out because we have seen some late movements. That was one of the examples. It moved late as it was about approaching. Quite tough for the keeper to try and stop it. Now he gets the first run. I believe he's not comfortable with his helmet. Every ball he plays, then he gets and just adjusts his helmet. Maybe not used to put that on. And a single to finish, 12 gone. It's 78 for 5. Look at the equation. Normally you don't see when you're chasing, but the approach is absolutely missing. Now it's around 18 runs you got to go with. But talk about Sujil. I believe he heard us. He heard us rather. He took his helmet off. Maybe it's a spinner going to attack. That's why he might be feeling a bit comfortable now. So let's see. He was going through some concerns. This helmet was coming out as a pain in neck. Now the helmet is off. Let's see. Is he going to make that ball go off? बिल्कुल अब हेलमेट उतारी है दोनों बल्लेबाजों ने और हवा में गेंद, लेकिन नो मैन इज लैंड में गेंद गिरी है और 2 रन बनाने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास. अगर डायरेक्ट हिट लगती तो नजदीकी मामला बन सकता था. रन आउट के चलते एक और विकेट यहां से मिल सकती थी. काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे यहां से हेलमेट में, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से आज पहली मर्तबा हेलमेट पहनी है इस खिलाड़ी ने और तभी जाके अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे और अब जाके दोनों बल्लेबाजों ने वो हेलमेट जो है वो उतारी है और रनों की रफ्तार को बढ़ाने का मेरे ख्याल से इरादा अब जाके कर लिया है, क्योंकि अब यहाँ सिंगल्स डबल्स के सहारे आप इस मुकाबले को नहीं जीत सकते हैं. 19 रन प्रति ओवर के हिसाब से आपको रन्स दरकार. अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर और रन्स बचाए हैं अपने टीम के लिए. बेहतरीन एफर्ट वहां पर खिलाड़ी की जानिब से. Sujil also not impressive. Looks a bit reluctant. Should I go for the big shot? Maybe I mistime it. Maybe caught. It's trying and just exploiting his, I believe it's just reading his mind. 81 for 5. And Sujil just a strike rate of around 50 runs. Let's see now Saini's approach. Helmet off. And he waits for Tausif. So there is going to be a flight. Maybe he's asking him for the temptation. And he straightly goes straight to the next recover. Short inside the circle. Fumble allows Saini to go and change his ends. Go for a single. Still Kathua Warriors. I guess they have to play a match again. And I guess they have to go against the likes of Sultan Warriors, Baramulla. And do you have any expectations, Arslan? Because the way we could see the team today, Sultan Warriors came, they failed completely with the bat, but हर साल हजारों लोग गलत इलाज का शिकार होते हैं. वजह वही पुरानी, सही वक्त पे सही डॉक्टर का ना मिलना या सही वक्त पे सही डॉक्टर तक ना पहुंच पाना. अब सॉल्यूशन है आपके हाथ में. टेलीप्रैक से कंसल्ट करें देश भर के टॉप डॉक्टर से, कहीं भी कभी भी. तो अभी डाउनलोड करें टेलीप्रैक ऐप. तबीयत खराब है लेकिन हॉस्पिटल तक जाना डिफिकल्ट लग रहा है? डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि हम लेके आए हैं टेलीप्रैक, एक ऐसा स्मार्ट हेल्थ केयर ऐप जहां आप घर बैठे ही टॉप डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशंस कर सकते हैं. घर बैठे ही आप अपने लैब टेस्ट्स भी बुक कर सकते हैं और हाँ, यहाँ आप अपनी मेडिसिन भी इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी सेविंग्स के साथ. तो अभी डाउनलोड करें टेलीप्रैक ऐप. change of keeper.
No, Tausif Iqbal. And it just gets padded up, and Sohaib now gets ready to bowl. Normally, Sohaib, he would actually start his career as a great batting all-rounder, bowling all-rounder. Since some time in the past, we haven't seen him bowling regular. He would bowl as a pacer. I remember when he would play with Root to Fruit Cricket Club Shopian. Swings. That's gone. And a fielder from the square leg gets there and he stops it with ease. Only a single. Mansoori. मेरे ख्याल से इस पूल की अगर बात की जाए तो सुल्तान वेरियर्स बारामूला के पास सबसे बड़ा मौका है टॉप करने का इस टीम के विरुद्ध। हालांकि 2 मुकाबले ये टीम खेली है और दोनों मुकाबलों में पहले मुकाबले की बात की जाए तो एक बड़े मार्जिन के साथ शिकस्त मिली है इस टीम को और आज फिर से वही सिचुएशन नज़र आ रही है। पिछले मुकाबले में शायद 96 रन इस टीम ने बनाए थे जबकि 237 का पीछा करना था और आज 219 रन दरकार और अभी तक केवल 84 रन बनाए हैं 5 विकेटों के नुकसान पर 21 रन प्रति ओवर के हिसाब से आपको रन दरकार और सुल्तान के पास एक बड़ा मौका है इस पोल में टॉप पे जाने का। Oh no, again. Oh, drugged it. And he must be going. Well, he looked absolutely anguished on his partner, Sujil. There was no response at all from the other side. He had to go back. That was some throw from that cover fielder. Just watch out. Drive is it slow. And watch out there. And it was directly and it was nowhere in frame. It's a tough stage for a batsman to get out in that fashion. Run out he goes. Number 6. It's Sunny. And he still looks maybe. Some fraction of luck follows him, but no, he is nowhere in the frame. He needs to go back. He goes. It's 6 down. It's 84 on the board. And only 4 wickets remaining now. It's coming out quite easy, you know. One more coming down. Velly fresh. Just looking quite easy at the approach. Know that they're on the top of the game. Not bringing more of the efforts. You know, ultimately, this winning the match by in a big margin. This is actually, you know, this might come up at something where it can just change the fortune of some teams going to top the pool. You never know. Because if you try and just go full coat up 20 overs, it's quite obvious that you can't win from here. But if you keep wickets in hand, you get, you know, more runs close to that target. You never know, you know, all of a sudden there might be some changes in that net run rate and that can disclose the fortune of some top teams leading and going to the top of the pool. जी हाँ बिल्कुल नया टीम नई उमंग के साथ यहाँ पे खेलने आया है इस खूबसूरत खेल के मैदान से लेकिन इनके जज्बे और जोश की तो हमें कदर करनी चाहिए क्योंकि मेहमान टीम है और जिस जोश के साथ यहाँ पे आई है खेलने के लिए लेकिन एक चीज़ की कमी रही तालमेल उतना अच्छा है नहीं और जो कोचिंग इस टीम की है मेरे ख्याल से काफ़ी वीक नज़र आ रही है इसी के कारण ये दूसरा मुकाबला होगा उनका जो यहाँ से वो हार जाएगी। ये देखिए एक और विकेट और शायद मिल सकती है और रन आउट के चलते ये तीसरी विकेट जरूर मिल सकती है और मिल भी गई है यहाँ से क्योंकि अंपायर की उंगली जो है फजा में बुलंद होती हुई और ये 7वां झटका लगता हुआ और किस्मत भी आज पूरी तरह से साथ निभा रही है वैली फ्रेश कोल्ड की टीम का। Well, big confusion. Yes, no, and he's gone. It's Sujil Anderson, he's gone. And you could see the smiles on the face of Arif Mir. He knows he has got the big man. Actually, he got involved in that run out previously when it was that man Saini. And now he got himself involved and he had to pay the price. That's what cricket can do to you. Quite emotional. And I believe that what's going through the mind of this man. But Sujil goes. Not giving too much for the board. Not paining at all. It's 84 for 7 now. Only 3 wickets to go. And a question arises, can they go and pass that score which they scored around a day before? That was around 89 or 90 odd. They have got 3 wickets in. Let's see, can they go and pass triple mark? That's 100 on the board.
जी हाँ बिल्कुल, क्या अपने ही रिकॉर्ड को वो यहाँ से ब्रेक कर पाएंगे, क्योंकि पहली पारी में वो 96 रन बनाए थे, आज क्या उससे आगे जाएंगे या उससे पहले ही ये पूरी पारी सिमट जाएगी, ये देखने को मिलेगा अभी, क्योंकि 36 गेंदों का खेल आना बाकी है और 136 रन दरकार मुकाबले को जीतने के लिए। और ये देख लीजिए कैप्टन मीर आरिफ और इस टीम के ऑनर भी है और आज 4 विकेट उनने हासिल किए हैं। और अब जाके नए बल्लेबाज कैप्टन सूरज प्रकाश, सूर्य प्रकाश अब जाके नए बल्लेबाज बीच मैदान में प्रवेश कर चुके हैं और केवल 3 विकेट आपके हाथ में बचे और अभी भी काफी सारे रनों की दरकार, 23 रन प्रति ओवर के हिसाब से आपको दरकार है मुकाबले को जीतने के लिए। और 15वें ओवर का खेल अब जाके शुरू हो चुका है और सुहेब सलमान हमीद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के गेंदबाज पीछे हटकर स्ट्रोक लेना चाहते थे, नीचे रहती हुई गेंद पूरी तरह से बीट हुए बल्लेबाज, गेंद सीधे जाके विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर बदस्तूर 84 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। सूरज प्रकाश जो कि इस टीम के कैप्टन हैं, 8वें नंबर पे आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए और नितिन वर्मा नॉन स्ट्राइक एंड पे, जिन्होंने भी अभी तक अपना खाता नहीं खोला है और काफी मुश्किल है अब जाके यहाँ से इस मुकाबले को जीत जाना, क्योंकि अब आपके पास वक्त कम बचा है और प्रति ओवर के हिसाब से आपको तकरीबन 4 छक्के लगाने होंगे और ऐसा यहाँ से अब बिल्कुल नामुमकिन सा नजर आ रहा है, क्योंकि वाइड का इशारा यहाँ से अंपायर की जानिब से। अतिरिक्त रन के हिसाब से अगर बात की जाए तो एक और इजाफा होता हुआ 87 पे पहुंच चुका है, 86 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। और इस टूर्नामेंट के चीफ मेंटर मिस्टर जावेद दरियाल, और काफी हाथ बटाया है जावेद दरियाल ने ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का, क्योंकि अगर ये टूर्नामेंट जो है आज इतने उरूज पे है तो मेरे ख्याल से जावेद दरियाल का भी अहम किरदार रहा है इस मैनेजमेंट में। जो गाइडलाइंस जावेद दरियाल ने दिखाई है, फुलटास गेंद पर खेलने में कामयाब और गेंद 4 रन के लिए चली गई है। नितिन वर्मा ने अपना खाता खोला इस चौके के साथ और काफी देर के बाद गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई है 4 रन के लिए और पहला चौका यहाँ से नितिन वर्मा के नाम। और इस चौके के साथ नितिन ने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर 90 पे पहुंच चुका है 7 विकेटों के नुकसान पर। पारी का ये 15 ओवर इस समय प्रगति पर और 2 गेंदें अभी भी आनी इस ओवर की बाकी है। सलमान की बात की जाए तो पहले ओवर के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और अभी तक 7 रन खर्चे अपने पहले ओवर में, अभी तक विकेट लेस है। क्या सलमान यहां से विकेट दिला पाएंगे अपने टीम के लिए? अगर कुठवा वेरियर्स की बात की जाए तो 3 झटके लगे हैं आज रनआउट के चलते, आज 3 विकेट उनने यहां से गंवाए हैं और आज किस्मत ने भी भरपूर साथ निभाया है वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम का। करंट रन रेट धीमी गति के साथ यहाँ पे रन्स बना रही है कुठवा वेरियर्स की टीम। 6.28 की औसत से प्रति ओवर के हिसाब से यहाँ पे रन्स बना रही है कुठवा वेरियर्स की टीम और अभी भी काफी सारे रनों की दरकार। 31 गेंदों में 128 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए और यहाँ से जोरदार अपील और एक और विकेट यहाँ से गिरता हुआ नितिन वर्मा केवल 4 रन बनाकर और इस प्रकार से यह 8वां झटका लगता हुआ कुठवा वेरियर्स की टीम को। 15 ओवर का खेल मुकम्मल, 92 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। और अब केवल 2 विकेट आपके हाथ में बचे हैं। बल्लेबाज निराश कदमों के साथ मैदान छोड़कर वापस एक कम उम्र के खिलाड़ी पंकज कुमार, अभी भी नए बल्लेबाज पंकज कुमार मेरे ख्याल से 17-18 के उम्र के होंगे ये खिलाड़ी और काफी जोश है इस खिलाड़ी में। पिछले मुकाबले में जब उमर गुल को क्लीन बोल्ड किया था तो तब जाके वो सेलिब्रेशन जो दिखाई थी यहाँ पर पंकज कुमार ने तो काफी पसंद किया था इस खिलाड़ी को, यहाँ के दर्शकों ने काफी पसंद किया था इस खिलाड़ी को, वो सेलिब्रेशन काफी रास आई थी।
और अब जाके आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, जबकि केवल 30 गेंदों का खेल बचा है और काफी सारे रनों की दरकार मुकाबले को जीतने के लिए। और एक बात मैंने यहाँ पे नोटिस की है बाबा कि कठुआ वेरियर्स के सभी खिलाड़ी जो है हेलमेट लगाकर वो पूरी तरह से अनकंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। Well, it's quite understood because I believe they're not used to this kind of format. Maybe this leather cricket. Yeah, just playing too much of cricket when it comes to just that Costco cricket, tense cricket. But now, you know, day by day, they're grooming into that confidence more often. And I came to know they're participating in that winter edition in the Jammu. They bring some different players. They bring some, you know, we believe champion players. So overall, it's bringing quite a good taste. And still, it's, you know, we need to just present the salute to the courage they bring in. Like that, we are just like a simple team. You know, we got to go just face some, you know, tough and, you know, champion sides. Ultimately, there are a lot of appreciation from the crowd, spectators, management committee coming and taking participation in this good of, you know, House of L Champions League. And they're lacking the atmosphere. You know, this actually impresses them a lot. And you never know, they come back stronger in the second edition. Ample of time. Oh, gone! One bounce. It's gone over 5 leg and it's gone for 4. And he will love that. He will love that through the ages. Suraj Prakash. And Suraj Prakash, the captain of Kathua Warriors. Look, they got ample of time to shuffle across rather. And he got it hit beautifully. एक बात तो तय है बाबा, क्योंकि जब हमने शुरुआत में सूरज प्रकाश से बात की थी पिछले मुकाबले में, तो उस किस्म की फैसिलिटी। Think mobile. Think Solucity. विकेट्स गिरते रहेंगे, लेकिन आपके पैसे को गिरने न देगा हाउस ऑफ वेल्थ। का जो विकेट यहाँ पे बनाया गया है, तो बिल्कुल अब जाके वो यहाँ से जब वापस जाएंगे तो मेरे ख्याल से दिन ब दिन वो इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। उनके सरकार को भी इस बात को नोटिस कर लेना चाहिए कि वहाँ पे फैसिलिटी को प्रोवाइड करे, क्योंकि इतने युवा खिलाड़ी है, वहाँ पे टैलेंट है लेकिन फैसिलिटीज़ की कमी मुझे नज़र आ रही है, और तभी जाके वो क्रिकेट जो है कठुआ का वो इतना बैक मुझे नज़र आ रहा है। फिलहाल 99 रन 8 विकेटों के नुकसान पर 16 ओवर का खेल यहाँ से मुकम्मल हो चुका है, और अब जाके नए ओवर की शुरुआत। 24 गेंदें और 121 रन दरकार मुकाबले को जीतने के लिए। अभी भी 100 का आंकड़ा यहाँ से नहीं छुआ है कठुआ वेरियर्स की टीम ने। पंकज कुमार और टीम के कैप्टन सूरज प्रकाश इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार गेंद को खेलने में कामयाब, काफी दूर ये गेंद जाएगी, बड़ा छक्का पंकज कुमार के नाम, और पूरी टाइमिंग और ताकत के साथ ये स्ट्रोक लिया है पंकज कुमार ने, और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर चली गई है 6 रन के लिए। Pankaj the destroyer, Pankaj the lofter, and the Pankaj the smasher of the ball. Never easy against his likes of Nan Salman. What a shot from this young guy! And again, straight down the ground. There is a fielder. Arslan, look at the total. It's gone past 100. Quite pleased. Once again, the boss alongside the Laktipura Cricket Association officials. They're on the big screen. Waving his hands. Zahid Afzal also out there. Wow. Oh, what was he trying to bowl? What was he trying to bowl? That's gone way past down the leg stump. Second time we have seen him. It's a no ball, and it's also gone for 4. Second time we have seen this man doing. It's absolutely something you never expected from Salman, who is absolutely experienced guy in bowling in these situations. खराब गेंद, क्योंकि काफी इजी लिया है यहाँ से वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम ने इस मुकाबले को, और तभी जाके वो इस प्रकार की अब गेंदबाजी कर रहे हैं, और फ्री हिट का मौका है यहाँ पर सूरज प्रकाश के पास। देखते हैं इस फ्री हिट का वो लाभ उठाने में कामयाब रहेंगे क्या, एक बड़ा स्ट्रोक आएगा सूरज प्रकाश के बल्ले से,
क्योंकि ऐसे मौके तो आपको बार बार नहीं मिलेंगे। और यहाँ से क्लीन बोल्ड हुए सूरज प्रकाश। क्या हो रहा है यहाँ से सूरज प्रकाश के साथ? It's a single Nelson. That's what happens. You know, there is a single Nelson, a wicket is on. That's what David Shafford would believe when he would be doing the umpiring. And there you go, another great time. Absolutely wonderful scene, great visuals. And Mr. Khalid. Mr. Khalid, the groundsman, he is on the screen and he's enjoying his moments, waving hands. And with 9 down now, and single Nelson, most of the times you will find a wicket. That's what has happened. Captain Suraj Prakash goes. Actually, that was a free hit. That's not going to be considered as a wicket. Oh, ball him! Next ball goes! Oh! What are you doing, Salman? Have some passion on the poor nose of this man, Suraj Prakash. And with this, I believe the Suraj of Kathua Warriors team also goes down. It's setting down. It's not rising at all. A late reaction to the ball. When you are late to this kind of pace, the ball is going to knock over, and he knows it. 9 goes. It's 1-1-1 for 9 now. एक ही बल्लेबाज और 2 गेंदों पर लगातार क्लीन बोल्ड। तो मेरे ख्याल से मैंने पहली मर्तबा ऐसा क्रिकेट में देखा है। और पहली गेंद पे फेड का मौका था तब भी बोल्ड हुए, और अब जाके अगली गेंद उस पे भी बोल्ड हुए। बहरहाल ये नवा झटका लगता हुआ कठुआ वॉरियर्स की टीम को। और अब अंतिम जोड़ी बीच मैदान पर राजेश लाल नए बल्लेबाज और पंकज कुमार 8 पे नाबाद। 33 रन प्रति ओवर के हिसाब से आपको दरकार मुकाबले को जीतने के लिए। और मुकाबला जो है काफी हद तक तकरीबन 99% ये मुकाबला जीत लिया है वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम ने। और राजेश लाल अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। देखना होगा राजेश लाल और कितने रन जोड़ पाएंगे अपने टीम के लिए। आखिरी जोड़ी इस समय बीच मैदान पर सलमान। विकेट कीपर से चकमा देती हुई गेंद 4 रन के लिए चली गई है। हालांकि काफी पीछे खेलने गए थे बल्लेबाज, विकेटों को छोड़कर अजीबोगरीब अंदाज के साथ यहाँ पे स्ट्रोक देना चाहते थे, लेकिन खुशकिस्मत यहाँ पर बल्लेबाज की और गेंद सीधे जाके थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है 4 रन के लिए। इस तरह से ओवर मुकम्मल हो चुका है और शायद अभी भी एक गेंद का आना इस ओवर में बाकी है, क्योंकि एक नो बॉल डाली थी और एक पहली गेंद वाइड चली गई थी। आखिरी गेंद का आना इस ओवर में बाकी है। 16.5 ओवर की गेंदबाजी, 115 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। सलमान आखिरी गेंद के साथ 19 रन अभी तक खर्चे हैं और एक विकेट उनके नाम। और अंतिम गेंद यहां से ढाट चली गई। इस प्रकार से 17 ओवर का खेल मुकम्मल, 115 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। अठारह गेंदें बची है और 18 गेंदों में तकरीबन आपको 17 छक्के लगाने होंगे, तभी जाके यहां से कठुआ वॉरियर्स की टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। लेकिन ऐसा तो हम बिल्कुल सपने में सोच सकते हैं, हकीकत में नहीं। 105 रन अभी भी दरकार मुकाबले को जीतने के लिए। पंकज कुमार ने 8 रन बनाए हैं, राजेश लाल ने 4 रन बनाए हैं। और पहला मुकाबला भी बड़े मार्जिन के साथ हारी थी जेके 11 शुपैया के साथ। आज दूसरा मुकाबला भी बड़े मार्जिन के साथ 100 से ऊपर के रनर्स के साथ यहाँ पे हारी है आज वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम के साथ। 18वें ओवर की पहली गेंद और बाल बचे यहाँ पर बल्लेबाज, शायद गेंद उनको दिखी नहीं। और फैजान डार गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। उनके कोटि का दूसरा ओवर, अभी तक केवल 6 रन खर्च किए हैं और एक सफलता उनके नाम। क्या फैजान डार इसी ओवर में इस आखिरी जोड़ी को चलता करेंगे, ये देखना होगा। और 37 रन अब रिक्वायर्ड रन रेट की दरकार। अब यहां से मेरे ख्याल से 0% भी कोई चांस नहीं बचा है कि अब आप यहां से इस मुकाबले को जीत जाएंगे। 18वें ओवर का इस समय खेल प्रगति पर। 16 गेंदों में 105 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए और एक विकेट दूर है यहां से वैली फ्रेश कोल्ड चेन की टीम इस मुकाबले को जीतने के लिए।
पंकज कुमार अगली गेंद का सामना करेंगे। फैजान डार चले फुल टॉस गेंद और बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए। विकेट कीपर के पास कोई मौका ही नहीं बचा था कि गेंद को रोकने का, और वाइड का भी इशारा आया है अंपायर की जानिब से। कुल मिला के 5 रन मिलेंगे इस गेंद पे। इन 5 रनों के इजाफे के साथ 120 9 विकेटों के नुकसान पर, और 16 गेंदे 100 रनों की दरकार। पंकज कुमार और राजेश लाल की ये अंतिम जोड़ी इस समय बीच मैदान पर। आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था वैली फ्रेश की टीम ने, और उन्होंने 218 रन बनाए थे। 219 रन का लक्ष्य खड़ा किया था, और 219 रन यहाँ पे दरकार थे कठुआ वॉरियर्स की टीम को, और अभी तक 120 रन केवल बनाने में कामयाब, और 9 विकेट यहाँ से गंवाए हैं कठुआ वॉरियर्स की टीम ने। और आखिरी जोड़ी इस समय बीच मैदान पर 18वें ओवर का इस समय खेल प्रगति पर। फैजान डार अगली गेंद के साथ सामने रहेंगे बल्लेबाज पंकज कुमार, जो कि 8 पे नाबाद। क्या इसी ओवर में यहां से विकेट प्राप्त कर पाएंगे? इस बार गेंद को ड्राइव किया है, लेकिन मिड ऑफ पर खिलाड़ी तायना, फिर से रन आउट होने का खतरा। लेकिन अगर थोड़ी सी सुस्ती दिखाई है वहां पर खिलाड़ी ने, अगर तेज थ्रो डालते तो मेरे ख्याल से ये अंतिम जोड़ी भी वापस चली जाती। और थर्ड अंपायर की तरफ इशारा किया है यहां से। अंपायर ने देखना होगा अंपायर का फैसला क्या आएगा। डिसीजन पेंडिंग, और अगर यहां पे तेजी से थ्रो किया हो तो, और यहां से विकेट गंवाई है शायद, लेकिन गेंद शायद टच नहीं हो रही है विकेट से। उनके हाथ से गेंद छूटी है और विकेट से टच नहीं हो पा रही है शायद। उनका हाथ तो जरूर लगा है स्टम्स के साथ, लेकिन शायद गेंद टच नहीं कर रही है। अभी भी थर्ड अंपायर पूरी तरह से जांच कर रहे हैं इस फैसले का। और ये देख लीजिए बल्लेबाज काफी बाहर है, लाइन के काफी बाहर है, और हाथ तो जरूर लगा है विकेट के ऊपर, लेकिन शायद गेंद जो है वो टच नहीं हो पा रही है, और काफी मुश्किल ये जजमेंट नजर आ रहा है। और अभी भी फैसला आना बाकी है। थर्ड अंपायर जो है पूरी तरह से यहाँ पे जांच कर रहे हैं कि शायद ये हाथ लगा है या गेंद स्टम्प के ऊपर गिरी है। और नॉट आउट का इशारा यहाँ पर अंपायर की जानिब से, क्योंकि ऐसा लगा था कि गेंद जो है वो काफी दूर थे, काफी केवल हाथ लगा था, और बहरहाल यहाँ पे नॉट आउट की कॉल। और 14 गेंदे 100 रनों की दरकार मुकाबले को जीतने के लिए। रिकॉर्ड रन रेट 42.86 की औसत। पंकज कुमार ने 8 बनाए हैं, राजेश लाल 4 पे नाबाद। फैजान डार अगली गेंद के साथ स्लोवर पूरी तरह से पिक नहीं कर पाए, पीछे गए और गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क नहीं हो पाया, और गेंद सीधे जाके विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 120 रन 9 विकेटों के नुकसान पर कठुआ वॉरियर्स की टीम का आज ये दूसरा मुकाबला यहाँ पे खेल रही है। पहला मुकाबला JK11 टीम की साथ वो हारी थी एक बड़े मार्जिन के साथ, और आज फिर से एक बड़े मार्जिन के साथ यहाँ पे इस मुकाबले में शिकस्त उनके नाम, क्योंकि अंतिम 13 गेंदों का खेल बचा है। इस बार छोटी गेंद पुल करने की कोशिश, लेकिन फिर से संपर्क नहीं हो पाया, और उस प्रकार से ये ओवर मुकम्मल हो चुका है। 18 ओवर्स का जो खेल है वो मुकम्मल हो चुका है। मजीद 2 ओवर का खेल बचा है, अंतिम 12 गेंदों का खेल बचा है, और 50 रन आपको प्रति ओवर के हिसाब से दरकार मुकाबले को जीतने के लिए। 12 गेंदों में 100 रन चाहिए आपको यहाँ से, और ऐसा तो बिल्कुल नामुमकिन यहाँ से नजर आ रहा है। अगर आप हर गेंद पे 12 गेंदों पे 12 छक्के भी लगा पाएंगे तब भी आप इस मुकाबले को नहीं जीत जाएंगे। और देखना होगा क्या यहाँ से पूरी 12 गेंदें फेस कर पाएंगे कठुआ वॉरियर्स की टीम, या उससे पहले यहाँ से ऑल आउट होकर वापस चली जाएगी। नए गेंदबाज शाहिद जो कि पहली मर्तबा गेंदबाजी करेंगे आज इस मुकाबले में। अभी तक शाहिद ने कोई ओवर नहीं डाला है, अब 19वें ओवर के साथ वो गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पहली गेंद डिफेंस के अंदाज के साथ इस गेंद को खेला और 1 रन बनाने का मौका दिया बल्लेबाज को, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर 121 पे पहुंच चुका है 9 विकेटों के नुकसान पर। शायद 2 या 3 कदमों का उनका रन अप और
फिर से बीट हुए बल्लेबाज, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था लेकिन नीचे रहती हुई गेंद और थर्ड अंपायर के लिए यहां से फैसला छोड़ा है मिस्टर जावेद दरियाल साहब ने। जी नहीं, बल्लेबाज बिल्कुल यहां से सुरक्षित नजर आ रहे हैं और नॉट आउट का इशारा। और यहाँ से कोशिश रहेगी कुटवा वेरियर्स की टीम की कि पूरे 20 ओवर का खेल यहाँ से खेला जाए और विकेट को यहाँ से बचाने की कोशिश करेंगे। अब उनके लिए यहाँ पे रन्स बनाना उतना अहमियत नहीं रखता है और यहाँ से ऑल आउट होकर टीम वापस चली गई है। कदमों का इस्तेमाल किया था पंकज कुमार ने और विकेट कीपर बिल्कुल विकेटों के पीछे चौकन्ने थे और उन्होंने ज़्यादा देर नहीं लगाई और इस प्रकार से कुटवा वेरियर्स की टीम केवल 121 रन बनाकर ऑल आउट हो चुकी है और वैली फ्रेश कोल्ड चीन की टीम ने ये मुकाबला 98 रनों से जीत लिया है। और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद पोस्ट फाइनल सेरेमनी में, तब तक के लिए दीजिएगा अपने मेजबान को इजाजत। अल्लाह हाफिज। Oley.
हर साल हजारों लोग गलत इलाज का शिकार होते हैं। वजह वही पुरानी, सही वक्त पे सही डॉक्टर का ना मिलना या सही वक्त पे सही डॉक्टर तक ना पहुंच पाना। अब सोल्यूशन है आपके हाथ में। टेलीप्रैक से कंसल्ट करें देश भर के टॉप डॉक्टर से, कहीं भी कभी भी। तो अभी डाउनलोड करें टेलीप्रैक ऐप। तबीयत खराब है लेकिन हॉस्पिटल तक जाना डिफिकल्ट लग रहा है, डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि हम लेके आए हैं टेलीप्रैक, एक ऐसा स्मार्ट हेल्थ केयर ऐप जहां आप घर बैठे ही टॉप डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशंस कर सकते हैं। घर बैठे ही आप अपने लैब टेस्ट्स भी बुक कर सकते हैं, और हाँ, यहाँ आप अपनी मेडिसिन भी इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी सेविंग्स के साथ। तो अभी डाउनलोड करें टेलीप्रैक ऐप। Think mobile. Think Solucity. विकेट्स गिरते रहेंगे लेकिन आपके पैसे को गिरने न देगा हाउस ऑफ वेल्थ। रन्स तो बनते रहेंगे, आपका पैसा कब बनेगा, जाने के लिए कांटेक्ट करें हाउस ऑफ वेल्थ को। Vision to life, ensuring your home is a true reflection of you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Baba Nisar, and I'm once again bringing you for this post-match presentation of the match number 13 of House of Wealth Champions League Laktipura. It was Valley Fresh Cold Chain, and they were locking horns against the likes of Kathua Warriors, and it came up quite simply. A simple victory for Valley Fresh Cold Chain. Finally, they ended up this very league by having a victory out of their 4 matches. So please, big round of applause for Valley Fresh Cold Chain for making a very, very easy victory. Well, we have got some awards to be mentioned over here. First, we go to the category of Guest of Honors Award. And I request Mr. Muhammad Akram Mir Saab, he will come forward and he will present the Guest of Honor Award, which goes to legend cricketer of South Kashmir, Mr. Muhammad Muslim Malik Saab, please. Muhammad Muslim Malik Saab, please come forward and he will receive the Guest of Honor. Muhammad Ismail Malik Saab, actually. Big hands for Ismail Saab. Thank you. Thank you very much. Moving on, we go to the top fan award of the match. And to present this award, I request owner of Chef X Grill and Chill, Mr. JB. Please, big hands for JB. He is going to present the top fan
of the match, which goes to Amir Rizwan. Big hands to Amir Rizwan, please. He will receive a beautiful t-shirt where it's written House of Wealth Champions League. Fan of the match, Mr. Amir Rizwan. Big hands to Amir Rizwan. Thank you. Moving on for one more, it's Game Changer Award. And to present this Game Changer Award, I request Sports Analyst J&K, Mr. Lal Muhammad, please come forward and he will be presenting Game Changer Award. And Game Changer Award goes to Dr. Tausif Iqbal for his brilliant 62 runs. Big hands for Tausif Iqbal. And I guess on his behalf, it's the owner, Mr. Arif Saab, who is coming to receive the award, Game Changer Award. Tausif, who batted brilliantly for his 62 runs. Big hands for Tausif Iqbal. Thank you Lal Saab, for your time. And moving to the last award of the game. And to present this award, I request Sayyid Mushtaq Shah Saab, please come forward. And he will just present this award, which is Man of the Match Award. Couple of great performances from Velly Fresh Cold Chain. But eventually, it came out as the owner of this side, the owner of Velly Fresh, Mr. Arif Mir, for his brilliant 30 runs and 4 wickets haul. Big hands to Arif Mir, sir, please. And we would love to just have some words with Arif Saab. Thank you. Arif Saab, I believe you started quite tough. You started with challenge, but finally a win and some smiles on your face. Assalamu alaikum to everyone. Alhamdulillah, we started from this tournament. Alhamdulillah, we will try to go there. From tomorrow we have a next tournament in Pulwama. Everyone heard about that. So it's a winning note for us. Let's continue winning from Pulwama, inshallah. And as you're about to just, get finished out in this tournament, so we would love to just have your experience. The way you came in, you got some tough opponent side to a side, but finish just with a victory. You believe it's really going to carry some morale boost for the upcoming events? Yes, Alhamdulillah, this is a very good moment for us. We started here today. It was our first win, but winning or losing is a part of cricket. And Alhamdulillah, this is a boost match for us. So we will keep continue with this performance, inshallah. And about this House of Wealth Champions League, as you said, as you say goodbye to this tournament now, but we'd love to have some words from you about this House of Wealth Champions League, Tripura. I really thank you. I really thanks to Mr. Zahid, the chief organizer of this tournament, and Mr. Jammu, who is the sponsor of this tournament. They have given us good moment here. We feel like we are playing like international cricket. Really, it's not a joke. So like this kind of wicket, we will expect next year better than this with some new new features. So keep continuing. Really appreciate for this tournament. Thank you very much, and congratulations for this man of the match, Arif Mir, the man of the match and also the owner of Velly Fresh Cold Chain. That's all what we have from the presentation party. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.